ये थी डबिया हो जाए बका कपूर वाला कपूर ऐसे देखा नहीं ये थी हम है जलवा देवे वाले आयल के ना कर यहाँ वजह से जल देवे तो ये बा हाँ लगा तो नहीं क्या है कि दिक्कत नहीं है नीचे वही में डबिया बा कपूरवा वाला फूलाहा जाता आई तेल है तनी से बा थी वाला हो कल जरल नहीं रहे में झील दे ले जा बजे बजे हम डाल दिया उठा दी ना लाई के नहीं कहाँ रात भर सोता रात भर लूल में यो जाए चटाई धोवल नहीं कहे चटाई ओढ़ ओढ़े यहाँ रोहर जाता पंखा तन बंद कर देता सुसु कर लो महावीर थोड़ा थोड़ा गर्म पानी कऽ के धऽ दे सिर आ जाए तो कपूर ले आओ ना वो कहाँ कपूर बाहर में पैकेट जल नहीं दे जल नहीं दे जल ना दे के थी वजह से उठा ले होता धैर्य तो करिए पहले छोड़ देने की आई के होता नहीं है तो बाद में
नहीं रखे तो फिर भी नहीं की बाजू खोलने के लिए बोली थी पर तूने देखी नहीं वो छाती खोल के उस दिन रख दी देखो मम्मी आई कमेंट लिख कर दीदी चली गई। गुड मॉर्निंग दीदी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, राधे राधे। संक्रांत, बहुत आदमी आज संक्रांत मनाते हैं, बहुत आदमी कल मनाए। हेलो हेलो है छोड़िए, जय माता जी बोलिए। हेलो है छोड़िए, जय माता जी बोलिए। जैसे भैया तो कुछ अटकल बगटाइए ना। हर हर महादेव, राधे राधे। आज हम लोग के यहाँ वही ना किसी का भी पहन के आएगी वही बोल रही भारी है चप्पल अंदर नहीं देखा क्या है दीदी? दिवाली, दिवाली ला
लायक मेरी है। हर हर महादेव। राधे 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 राधे। दीदी हमारे लाइव में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। हरिओम। गुड मॉर्निंग। धूप कर दिया, धूप लाइक। राधे राधे रटे चले आएंगे बिहार। हर हर महादेव। राधे 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 राधे। जय श्री राम। अयोध्या के धाम। ये देखो दीदी, ये रामायण। अरे शिव महापुराण, शिव ग्रंथ। हर हर महादेव। राधे राधे। श्री राधे राधे राधे। दो पर दीदी लाइक कर दिया है। जय भोले। मंगल भवना मंगल हारे। उमा सहित जय जगत पुरारे।
मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सन होई सुखारे। हर हर महादेव। राधे 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 राधे। सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोड़ जुग जानी। हर हर महादेव हर हर महादेव। धाम के बाबा तबीयत ठीक रहे।
आह, जय श्री जय श्री राम अयोध्या धाम। हर हर महादेव। राधे 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 राधे। जय श्री राम। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुन नर मन से मनीष करे। सुर नर मन से मनीष करे। रहा है। मैंने उनकी आईडी में परसों देखा था, परसों से मेरा दिमाग बहुत हैंग हो रहा है। उसे तो तुम भी और वो भी हाइड कर दो। ठीक है, आप जिस आईडी को पहचानती हो ना, उसी से आओ तो। हाँ, उसी से आओ आप। बार बार गुस्सा हो जाता है। अरे ये माइंड नहीं है दीदी, आपको मैंने बताया था, ये माइंड नहीं है उसका, ये आउट है उसका। वो कहता है मैं खाना खाता हूँ, सब बाहर को आता है। वो पागल बनाता है, पागल नहीं है। हम जैसों को फंसाता है वो, उसे लड़की का धंधा करता है वो। तुमको मैंने उस दिन कॉल पे भी बताया था और अब भी बता रही, वो आदमी किसी काम का नहीं है। अब दिव्या दीदी की आईडी में घुस चुका है, उसे चिकनी चिकनी बात करा। दिव्या दीदी ने इंस्टा आईडी भी दी है उसको। मैंने नीरज भैया को भी कॉल करा था तुरंत, मगर जाओ दिव्या दीदी के पास जाओ, समझाओ उनको।
उन्होंने कॉल ही ना उठाया। हाँ तो आप हाइड कर देना, वो तुम इंस्टा आईडी भी ना बताओगी ना, वो निकाल लेगा सब, फिर तुम्हें परेशान करेगा दीदी। ठीक है कॉल पर बताऊंगी। हाँ कॉल पर बताना। दिव्या की में, हाँ दिव्या की में देखा है मैंने, कल तो नहीं देखा, परसों देखा है। परसों कम से कम 2 घंटे सपोर्ट किया है उसने, और अपनी चिकनी चिकनी बातों में फंसा रहा है वो। बाबू आईडी पिन कर दो। मंजू दीदी की आईडी पिन हो रही, बाबू रुक जाओ अभी। बोलता है करने वाला हूँ। हाँ वही तो। हाँ भाई यही आईडी, आपको पहचान लिया, राम राम। हाँ दीदी मैंने कॉल मिलाया था, मैंने इंस्टा पे भी कॉल मिलाया था, ग्रुप में भी, आपने भी नहीं उठाया और ना ही नीरज भैया ने उठाया। नीरज भैया भी मेरे को 2 दिन से रुला रहे, दीदी रुला रहे, रुला बहुत रुलाते हैं, बोल रहे मैं कह रही दीदी सावधान हो जाना। बाबू भैया लोग से बोलो ना। हाँ सभी ज्वाइन कर लो भाई, बाबू को आप ज्वाइन कर लो बाबू, मोनेटाइज है ये आईडी से तो आता था। हाँ इस आईडी से आते थे आप। थैंक यू आने के लिए। अब पहचान ली भाई मैंने। कैसे हो आप? हर हर महादेव। राधे 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 राधे। जय श्री राम अयोध्या के राम। हर हर महादेव। राधे 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 राधे। जय श्री राम अयोध्या के राम। कब है? दूध लेना है। दूध लेना है।
का कैल शाम तू मथुरा में जाई के हर हर महादेव। राधे राधे राधे। अरे
करंट वाला टूट जाएगी। अरे वो देखना भाई, अरे ये देखो लगा रहा हूँ, रहने दे। हट रहा हूँ। हाथ लगा, रुक रुक रुक। और वो छू मत, मग्गा को बहुत दूर रख करके एकदम अंदर साइड कर। हाँ ये आ जा। तू ब्रश किया? मम्मी मैं ऊपर पानी लगा दी। मम्मी मैं ऊपर पानी लगा दी। लगा दी। लगा लो ऊपर ही। हाँ? ना बड़ा वाला ना, छोटा वाला। अरे हाँ छोटा वाला ना, चॉकलेटी कलर। वहाँ बेड पे नहीं में आटा लग गया था। फटा साया। दादी ये तो लग जाएगा किसी को भी। क्या करना? हर हर महादेव, राधे 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 राधे। जय श्री राम अयोध्या के राम। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। दादी ऐसे क्यों बैठी हो? कुछ बोलो भी। राधे राधे, तू बोल रहा। हर हर महादेव। राधे 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 ये खाई लो। राधे 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 राधे। कहानी हो गया राधे राधे। ये देखो अब उसको से ये हाँ तुमने दिखा राधे 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 अभी इमोजीज। अरे यहाँ से दबाई को तब ना। अरे एक मिनट का इमोजी बता तो डालेंगे। देखा हरी है ना। हाँ, अब देख। कुछ डालो कुछ डालो कुछ। देखा है जैसे लिखा है। अब बोलना। राधे 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 अब हो राधे गया राधे ना, वो राधे। जैसे दिखा।
नहीं है, कहो नहीं आता है वो नाटक। आप ऐसे वीडियो वाला लगाओ ना, वीडियो फोटो वाला फोटो लगाओ। आओ कहाँ बरे लेके गन का है। वो वाला उधर अगला वाला गुलाबी वाला। कुछ हुए क्या बाजी? ना ना नहीं चच्चू खाना मांग रहे थे दी। हाँ दे दा हम रुक जा। ए दे दिखाने दी। हाँ हम रुक जा, 9 बजे के अंदर खा ले बस। दादी मैं तो उठाई 8 बजे से 9 बजे के अंदर। दादी वो देख लो सुखलाइन दादी के बाजू में जो रहते हैं ना, हाँ वो उसके घर पे भी हुआ है आए थे, वो पानी डालते हैं ना, हाँ हाँ वही डाल देती है। हाँ। तो घर में से सबको भगा बोलते सब अभी 2 मिनट के लिए घर पे आ गया। हर हर महादेव, राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। दादी बाहर सो रहा है, देखो दादी एकदम बाहर सो रहा से है। उठा कहाँ सूता तड़ा भूया? भूया नहीं सोने का बाबू। दादी सुंदर कांड नहीं हो रहा तुम घर में? हाँ बस ठीक हो जाएगा। जब माता जी आती है किसी का तो सुंदरकांड नहीं होता। हाँ नहीं, क्यों? उनका ही पूजा होता है ना। माता जी की पूजा करते हैं, सुंदरकांड। ऐसे नहीं, ऐसे बैग रखते हैं। श्री राम जी। एक सेकंड। कितना गंदा गंदा नाम। हो गई ओके, एकदम ऐसे मत कर लो, ऐसा मटन खराब हो जाएगा। चलो भाई तनी गरम हो जाएगा उसको नहा लो फटाफट पूरा ओके। नहाने बंदा हो गए और देखो भाई चल ये लो हुए हो तो हो दे पाई लो, हो दे पाई हो दे। हां तो हो लो बच्चे। हां अब मैं एक प्लास्टिक का बाल्टी भी लाके देना। पाकर पे गरम उतना नहीं खा, उतने पे कबा नहाने बोलते पहले बोलती है खाता जैसा है। देख ले नहाने का है तुम्हारे दो पानी नहीं हर हर महादेव, राधे 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 राधे। तौरी
नहीं उधर ही रात होगी ना आगे चाय दीवा पड़ेगा तो पूजा किसी लाल दिखाओ मंगाएंगे ये लांग नींबू पानी ऑर्डर कर ऐसे दूध में लेना नींबू पानी है ये देखो कहाँ पे सुपर माँ। गणेश कालवा मेरे नीचे ए गणेश इसमें सो बेटा और उन्हें सुआ बाबू अरे और उन्हें सुआ बुढ़िया गणेश सीधा सो ए बाबू नीचे सो नीचे नहीं सो नीचे नीचे इसमें सो बाबू उठो नहाओगे नाने उठो बिस्तर पे सो बिस्तर पे गणेश हाथ तो गीला करके मेरे पास नीचे नहीं सो बाबू नीचे नहीं सो नीचे नहीं सो तो नीचे नहीं सो इसमें सो इसमें सो हाथ लगा दे मेरे सुआ अरे हाँ उठो बाबू खाओ के सोआ ये भी पहनूंगी आज ये बिछाने पर लात नहीं धरना तो सब तुम नहा लो कभी पापा आएगा पता नहीं शायद 18 आज निकल गए हो हाँ आज निकल गया होगा हाँ भैया लाइट चालू कर देना यहाँ का रिद्धि थोड़ा पानी रख देना हाँ हाँ लाइट चालू कर देना
गणेशा उठो।
खाना चाहिए कि खत्म करो? उसी खत्म लात न लगा बोला तेको पानी बचा के रख। मुझे भूख रही नहा में नहा रही थी, बोला थोड़ा आराम करिए। उधर दांतों निकाल बाबू बिस्कुट लेगा हाँ? बिस्कुट लेगा क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? राधे 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 अरे मैं लगाया था वो नहाने चल गए। मैं लगाई झूठे पानी ये किसका? तेरा कपड़ा कितने बार बोला है ऐसे मत फेंका कर। हाँ दे लिखा था नहीं ऐसे लिखा था अब वो गन्नू का बिस्तर। दादी गन्नू का बिस्तर है। हाँ अपना बैठा तो नीचे किसका बिस्तर रखा है फिर? उठा के इधर उठा रे सबका मैं उठा के इधर मैंने ऐसे रहने सोफा में रख दिया। गन्नू का फिर नीचे तो है ना, नीचे ही है। नहीं रात भर सो रहा किधर? सोई भी नहीं किया रात भर तो इधर लेके आई 5 बजे तो सोया उल्टी किया? नहीं, सोई नहीं रहा था क्यों फोन लिया रे? मैं रोज थोड़ा ना लिया। दादी ली दादी को दे दिया ये अब जल्दी फोन रख। चालू है ना भैया हर हर महादेव राधे दीदी आज तो किसको वोट देगी? जो मेरे को वड़ा पाव खिलाएगा उसी को देगी तो कोई नहीं देखो खिलाने वाला। हाँ पैसा धर लेता है से घोड़ा पाना दादी सब जगह तो 2,000 देवेला से। 2000 1000 साड़ी देता ना उसमें हाँ सेवरी को हतड़ी हर मारे एक बटन भाई है बंद हो देते। किधर का? वही उठाओ का।
सरी कोर खूब बटला है हर हर महादेव आज छुट्टी बा हाँ सबके हाँ पापा के छुट्टी बा हाँ आज ट्यूशन रहेगा। खिचड़ी की छुट्टी देता हूँ खिचड़ी आज है ना। हर हर महादेव हाँ आज खिचड़ी है ना लेकिन अपने घर कुछ नहीं करने का ना अपने घर तो पूजा पाठ भी नहीं करने का ना माता जी है। माता जी के ही करने का अरे अपने इधर 2-3 जन को हुआ है। तुझे भी बैठ तू है ना दौड़ दौड़ यहाँ वहाँ जाता लोग तो उनके घर से उनके घर उनके घर से उनके घर प्रिंस को मारा, प्रिंस के साथ खेलता था पूरा। हाँ उसको ले गया। सही में तुम लोग के नाखून बड़े हैं। हर हर महादेव दिख रहे हैं वो बड़े। इसके बड़े नाखून दिखते हैं। कितना दूर है यूजलेस। देवी पूजी पर कमल तुम्हारे सूर्य हर हर महादेव दादी चॉकलेट किसका है? हाँ वैसे हुए बिछाना मर्यादा ए लक्ष्मी वो बिछाना वो पता जाता कचारा था ना आज नहीं पढ़ते। ये पता मम्मी दादी आज नहीं पढ़ते हनुमान चालीसा। पढ़ ला हाँ हाँ दे रहा हूँ। हर हर महादेव हर हर महादेव हाँ लगता है गौरी जाग गई। गौरी जाग गई क्या? हाँ दे रहा हूँ। नहीं अभी तो लगाया मम्मी। तीन तीन छः 8 राम नमो नमो दुर्गा सुकन्या नमो नमो अम्बे दुखन्या निरंकारी तुम गौरी शिव शंकर तेरा एक मोटा है, तेरा एक छोटा है। हमारे चक्कर कुछ तो सही है सूर्य माही सिंह आई सिंह सिंह सदा सिंह की बगला सुखदाता सिंह राजे पानी छीन भाई के
चल जल्दी नहा, वरना भी नहाने नहीं दूंगी। मैं नहाऊंगी। ए पहले वो काम कर। ए वो थरिया नीचे रख के एकदम अच्छे से जा बिना बोले। जल्दी 5 मिनट में सकता। हाँ हाँ बाबा बोला ना लेके जाऊंगा तो देख ले दादी, देख ले अब कितना बार पे ही लेके जाई थरिया। हाँ क्या दे दादी इतने बार तो तू बड़ा एक बार बोलने पे चल जाती है। वो भी मैं ये बोल रही हूँ वो तो ये किसने लेके जाएगा? देख ले हाउ ना लेके जाए। कहाँ? हाउ गिलसिया करते रहे ना लेके हाँ जाए। ले जो वही में धर लेके ले, जा। हाँ डाल इसके अंदर डाल। वही में धर नहीं ले। लेके जाऊँ। आराम से, पानी का एक बूंद नहीं गिरना चाहिए। पानी कैसे गिरी? आराम है। वो नहीं रख किरे रे बल्टी मोटा वाला। खट्टा खट्टा चाहिए, खट्टा 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 बल्टी लगते करने इसमें बैठ के नहीं। पानी गरम करने वाला दे। वो गरम है, उसमें रख। चलो पानी खत्म हो गया। साबुन लगाया ना देख। हाँ भाई खा हो गया ना। चल जल्दी उठ जल्दी। हर हर महादेव। सामने के दुनिया आप लोग से एक सवाल पूछ रहे हैं, आप लोग बताइए जो लोग आई लव यू बोलता है उसे क्या होता है? कमेंट में जरूर, क्योंकि हमको मालूम नहीं। आप लोग से एक सवाल।
बेटा तो यूजलेस ये किसका? किसका है ये था? मेरा है, रहने देना 2 मिनट। अरे आज किसका? अरे रुक ना, अभी लेके जा रहा हूँ ना। बस पूरा मान लेना। दादी घरનું कौन सा कुदर एपिसोड है था वो दे दो ना। कौन मांगा ये कौन है? देखो मैडम, मैं जानता हूँ इस प्रोजेक्ट की आप इंचार्ज हो, लेकिन मुझसे कह के उसको मत दिखाना। अच्छा मैं तुमसे एक मदद की बात कर रहा हूँ, तुम मेरी बात करो। एक काम करता हूँ, तुम्हारी गाड़ी को ये सत्तम। ए टीचू, हाँ ये जरा शैम्पू काट के देना दो। दे दे इधर ले। फेंकेगी काट के दूँ हाँ, तो इसी से काट के दे। ले के हाथ से काट दिए पकड़ दे। ये पकड़ के दोनों सत्तम। हाँ एक पकड़ आज फिर से फालतू खर्चा कराई ये सरकारी नौकरी है देवरानी आप ऊपर की कमाई ऐसे ही उड़ाई बस करो भाभी बस इतने जाने मारो क्या और रात को बड़ी को इतना दोरी यूजलेस बस सारा काम यही करती है नहीं तू क्या करती है वो उठती है सजती है समझती है और निकल जाती है घर से घर के कामों से तो मुझे कुछ लेना देना नहीं है मालिक मुझे अपना परिवार चलाना आता है और भाभी मैं अपनी जॉब में बहुत ईमानदारी से करती हूँ आप लोगों को मशवरे की जरूरत नहीं ऐसे बदतमीजी से बात करोगी, बात नहीं। चलो, माफी मांगेंगे। आगे मैंने कहा माफी मांगो, बात नहीं। मैं तो माफी मांगू लेकिन कोई लड़की जब बहुत माफी मांगती है I'm sorry. मैंने तुम्हें बोला है ना, उनकी बातें एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया करो। मुझे आपके साथ धागा करना नहीं आता है मैं और नहीं रह सकती यहाँ पे अच्छा, तो फिर बहस करो। आप अपनी मर्जी मुझ पर नहीं थोप सकते मेरे पेरेंट्स का घर इंदौर में खाली पड़ा है आप चाहे तो मेरे और राहुल के साथ बातचीत कर सकते हैं अच्छा, आपके लोग गए, अपना पुश्तैनी घर छोड़कर अपनी बीवी के घर में शिफ्ट हो गया। आपको अपनी ईगो प्यारी है तो मुझे भी इससे परवाह है मुझे मेरा बात करती हो आप नहीं झूठ
हाँ रुक रुक। अरे दीदी मेरा ब्लैक कलर का ब्रश अंदर दे। मेरा ब्रश अंदर दे। ब्लैक ब्लैक एंड व्हाइट। नहीं ये इधर था ऐसी ही किसी कमरे में मुलाकातें पड़ी रहेगी। मरने के बाद इंसाफ के लिए तड़प रही हूँ। मुझ पर दुश्मन को इंसाफ मिलता भी नहीं। ना ही कोई तहकीकात हुई, ना ही कोई शोर मचा। मानो मैं एक इंसान हाँ मैं आपका स्वागत करती हूँ क्राइम पेट्रोल सतर्क वुमेन अगेंस्ट क्राइम के इस एपिसोड में। खिलौने सबको पसंद होते हैं ना। दादी देख रहे हो कृषि को? अरे वो कमाल कर हाइट तो रहने कुर्सी लगा के बाहर जा रही है इतना तो मेरी यूज है हर हर महादेव।
मरा ही नहीं। इधर आओ। इधर मेरे सोने में सिस्टम करना है। इधर आओ। आओ इधर। सेटिंग करो। सेटिंग करो। नहीं कर रही है। किसी कर रहा है? किसी कर रहा है? ये छोटी एक टिशू। हाँ। अरे गौरी शिक्षी कर रही है, मुझे लगा शिक्षी कर रही थी। खिला चाची को। ओ छोटी चाची, ओ छोटी चाची, ए सत्यम, सत्यम, छोटी चाची को बोल गौरी टॉयलेट बाथरूम कर रही है। राधे राधे। हाँ कर दी। अब सत्यम से ही मांगो। जिद करता है सत्यम नहीं करता। दो दो तीन तीन बार खाए, तीनों तीनों। ओ छोटी चाची, कब से बोल रहा हूँ गौरी इधर बाथरूम कर रही है, सुन नहीं रहे हो? अरे जाल बड़ी दीदी ना आ रही, वहाँ पे ही है, तब तो चिल्ला रही है। ऐसा बोला करो। अरे मैंने कुछ बोला ही नहीं। नहीं नहीं, अरे मैंने कुछ बोला ही नहीं तो। ये क्यों चिल्ला रहे हो? बोली ना, अरे नीचे भी काम ही कर रही हूँ। जाओ। बता दी मैंने कुछ बोली नहीं। मैं क्या बोला कि चले तो अंदर बाथरूम कर रही है, जाओ जल्दी। तो बोल रहा हूँ, जाओ जल्दी, जाओ जल्दी। बड़ी दी बोली तो मैं सुनी, मैं बोली आ रही हूँ। ये महाराज जी देखो ऊपर नीचे छोड़ के ऊपर आके सूसू करने का इनको जगह मिला है। थोड़ा देर वो साइड में माँ नहीं, संन्यास के लिए भी इनको चिकन जगह चाहिए। हट कर रही तो अभी वो करेगी, उठेगी नहीं जब तक वो करेगी। तो इसीलिए बोली जान लो कर रही है तो आ रही हूँ। नीचे गुदरा खमा दे। और कहाँ एक चटाई है ऊपर वाला। हर हर महादेव। राधे राधे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम, अयोध्या के राम। चटाइया ना हो जो पानी से धो के। नीचे जो बिछा के बिछाना है वो गौरी वोरी कैसे आती है वो तो नहीं चलता। हाँ ये धोलेगा कल की। वो चाची एक काम करोगी? क्या? वो तो छोटे छोटे बैग का वाला चाची जरूर है। किसमें है? अंदर बैग ब्लू कलर का। जो लादी पे। गाड़ी पे नहीं। हाँ लटका के दीवार में गद्दू का बैग है। हाँ। उसी में देखो। बलबुद्धि दिखता है। पैसे का दे दो। कई के कर आइडिया हो ए किसका हाँ? कई किसका आइडिया पढ़वे क्या लिखा है? सरस्वती के है का? हाँ हाँ? सरस्वती का देख के मालूम पड़ा। कैसे मालूम पड़ गया देखते। हर हर महादेव। हाँ हर हर महादेव। राधे राधे।
ये ले गौरी हुआ। एक ही चाहिए था करके लिए। अब रख देना एक यूज कर। इस पे रखी हो, रख देना। गौरी करेगी, अभी टाइम लगेगा। Capturing the revival point. हर हर महादेव। Help me. गौरी हो गया। हर हर महादेव। राधे 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 राधे। जय श्री राम अयोध्या के धाम। हर हर महादेव। जाओ, ये बोल रही थी धो देना, पेपर से कर दे दो। हो गया, हो गया गौरी, हो गया। दो में उठा के नीचे लेके चले जाओ। दो में उठा दो। इधर खड़े हो, इधर खड़े हो, इधर 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 इधर। वाह, संदास भी गोरा गोरा जगह था, इतना चाहिए। करना है? रोजू? अब ये क्या देख रहा है? यहाँ पर पानी बहुत कम पीता हूँ। रोजू? खतरनाक बल्लेबाजी देखने मिली हुई इन दोनों ने सेंचुरी लगाकर तबाही मचा दी। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के सेकंड ओडीआई में क्या क्या हुआ, चलो समझते हैं टॉप 5 मूवमेंट्स के जरिए। नंबर 1, पहले इंडिया बैटिंग करने आया जब रोहित शर्मा 24 रन और विराट कोहली 23 रनों पर आउट हो गए, लेकिन फिर कैप्टन शुभमन गिल ने 56 रनों की बेहतरीन पारी खेली। और इस मैच में एक छक्का और 11 चौके मारते हुए 112 रनों की तूफानी शतकीय पारी खेल रहे हैं। मैंने किया, मैंने इस मैच में काफी बढ़िया रही, जबकि दो ये अपना दे दो, सैनिक का पैकेट खोल देते हुए पड़ा रहता है। अरे नीचे बाथरूम वगैरह करने का क्या बात है चीकू, वैसे नंबर वन पे आ गया तू। हाँ अभी तू भी आज रन बना और ये गंजे को पीछे छोड़। अरे यार तू तो देख लो चीकू, टॉस हार गए। अबे यार लेकिन बैटिंग आ गई। आज तो मेरा डेब्यू होगा ना। In the air, Rohit Sharma gone. First ball boundary for Virat Kohli. In the air, take a trace yet gone. मुझे खिलाते तो आज को मैं सेंचुरी दिखाता। विराट कोहली गॉन। कोहली और रोहित दोनों जल्दी आउट हो गए। मैं जाऊँ क्या? रुक जा, नीतीश को जाने दे। Good shot, but not enough to clear the boundary. अब तो जाऊँ ना? आजा। हर्षित राणा डिपार्ट। ये करने क्या था? रोहित का स्टार्ट देखने पहले चला गया। जो आंटी दिन भर घूमती रहती है ना, आपको बुला रही है। चौको तो मम्मी नहीं है। अच्छा आंटी, मम्मी बोली है कि वो घर पे नहीं है। अच्छा घर पे नहीं है, अब बोली कैसे? दादी आप मेरी मम्मी का खुश नहीं रहती है क्या? क्या हुआ? कभी खुश होकर बात ही नहीं करती है मेरी मम्मी
कुछ क्या होना है? हाँ समझ गई, इसीलिए मम्मी आपकी चुगली करती रहती है देखो फोन पे। मुझे मारी हो जाएगा क्या? ये तुम्हारा आंख दिखेगा, यहाँ तुमको कोई नहीं बोलेगा। ये पूरा आपका है? हाँ कॉलोनी में ना सब लोग कहते हैं कि अंकल 2 नंबर का पैसा कमाते हैं, इसीलिए आपका घर इतना बड़ा है। बेचारी हम नहीं बोलते, गलत बात है। चॉकलेट खाओगी लाए? नहीं नहीं, मैं आपके घर का कुछ नहीं खाऊंगी। मेरी दादी कहती है कि आप काला जादू करती है। बहुत ज्यादा सर दर्द कर रहा है मेरा, जिनकी परेशान मत करना, हम सोने जा रहे हैं। मम्मी दादी कहती है कि सोने के लिए आप सर दर्द का नाटक करती हैं। देखिए ससुर जी, मैं हमेशा से ही दहेज के खिलाफ रहने वाले लोगों के खिलाफ रहूं। इधर तो मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, ये मोटा मोटा दहेज है। फॉर्चूनर ससुर जी, सोलर लाइट इंग्लिश में होगा। ओ सोलर लाइट। अंग्रेजी में होगा, पूरा समझ में नहीं आ रहा होगा, इसीलिए बोलते हैं कि अंग्रेजी इज वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट। ये हो गया नया चप्पल लेते हैं। ससुर जी मास्टर्स की डिग्री है हमारे पास। मास्टर्स की डिग्री ससुर जी, मास्टर्स की। अभी आगे भी पढ़ेंगे और ग्रैंड मास्टर की डिग्री लेंगे। इस यूनिवर्सिटी का नाम तो कहीं सुना नहीं मैंने। भाई यार तुमको कितनी बार बताएं, बैचलर्स की डिग्री 25,000 और मास्टर्स की डिग्री 40,000। अबे यूनिवर्सिटी का क्यों टेंशन ले रहे हो? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, जुगनू यूनिवर्सिटी है। नहीं वैसे ससुर जी, लंबी कहानी बात होता है। हाँ तुम पहले पैसा भेजो ना। आपने बोला था कि शादी के बाद हमारी बेटी महल में रहेगी। ससुर जी बिल्ली के लैट्रिन में पैसा चला गया आपका सेट। हाँ है वो महल। ससुर जी हम जिस माली की गाड़ी साफ किया करते थे ना, उन्होंने ही हमें अपने महल में छोटा सा जगह दिया हुआ था। शादी के बाद आपकी बेटी वहीं झाड़ू पोछा करेगी और उन्हीं के मकान में राजा वाली जिंदगी जिएगी साहब। ससुर जी आप गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है, आप सारे के सारे एक साथ absent हैं? चलो आज शांति तो रहेगी। बच्चों पर तुम सब absent थे तो आज बहुत सारा मूड बचा है। चलो तुम अपनी कॉपीज निकालो, आज की क्लास खाली। बिना बच्चों के क्या ही करोगी? 2 दिन बाद तुम्हारी सुबह है। 3 दिन तक बच्चों का एक साथ गायब होना इत्तेफाक नहीं है। हेलो हेलो, आपने अचानक फोन किया, क्या हुआ? मेरी बच्ची ने कोई गड़बड़ तो नहीं की? अगर आप लोग तो बच्चे स्कूल आएंगे तभी कोई गड़बड़ करेंगे ना। ये कैसे बात कर रहे हो आपने? मेरी बच्ची रोज स्कूल आती है, पूरी फुल अटेंडेंस है उसकी। बच्चे रोज स्कूल के लिए निकल रहे हैं और स्कूल नहीं आ रहे, पता करना पड़ेगा। तुम जा रही हो? बाय। जल्दी जाने का कोई देखता है। आज तो देखती है सब जाते गए। बहुत दिन लगते हैं ये सब जमा करने में। अब आप खूब पैसे कमाना। अगर कोई मुझे पूछे कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, तो मैं एज अ क्रिकेट फैन बोलूंगा द रिवेंज ऑफ हिटमैन। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि रोहित मैदान पर उतरता है तो उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही होती है कि इन्होंने पूरे देश का 19 नवंबर खराब कर दिया था ना, तो इनको भी कुछ रिटर्न गिफ्ट देना बनता है। और उसके बाद जो हुआ वो एब्सोल्यूट सिनेमा था। वो खेल नहीं रहा था, बॉलर्स के साथ खिलवाड़ कर रहा था, हर एक शॉट पर्सनल हो गया था। उस दिन के बाद पहली बार रोहित के चेहरे पर ऐसी स्माइल थी। आखिर में वो अपने माइलस्टोन तक नहीं पहुंच पाया, पर उसने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया था। 50,000 में कार मत बेचो, आपका 3 लाख का नुकसान हो जाएगा सर। 20 साल पुरानी कार है, मैंने 10 लाख की ली थी। आप कितना दोगे? 50,000 ले लो। थोड़ा संभाल लो, कस्टमर है। सब संभाल। बेटे जल्दी बता, कैसे मुझे इस खटारा के 3 लाख मिलेंगे? अरे अंकल, आपको गवर्नमेंट की स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में नहीं पता है क्या? बेटा नहीं पता है ना? अगर आप 20 साल पुरानी कार को स्क्रैप करते हो तो आपको 5 से 6% कार की वैल्यू मिलेगी, मतलब 50,000 और एक स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट भी मिलेगा। एक कागज के सर्टिफिकेट से क्या होगा? क्यों बेटा आप आगे बताओ। मान लो अगर आप स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट को दिखा के 18 लाख की थार लेते हो तो आपको उसमें 5 से 6% का डिस्काउंट मिलेगा और आपकी रजिस्ट्रेशन फीस भी माफ हो जाएगी और रोड टैक्स में आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब 18 लाख की थार पे 3 लाख का डिस्काउंट। इनको ये सब कैसे पता चला? आपके लड़के नहीं बताया। 50,000। भैया बढ़िया वाले पटाखे दिखा दो। बिट्टू, तेरी औकात नहीं है ऐसे पटाखे खरीदने की, चल जा यहाँ से। ये रहा मैडम। चल बाबू। हाँ भैया, आपको क्या निकाल दूं? भैया आपकी दुकान के महंगे से महंगे पटाखे निकाल दो। भैया ये निकाल दूं? निकाल दो। ये निकाल दूं? ये भी निकाल दो। ये निकाल दूं? 2,000 रुपए का है। 2,000 रुपए का? अरे 5,000 रुपए का निकाल दो। ठीक है। हाँ ये सब निकाल के रखो, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में। ठीक है भैया। सुनो, मुझे पता है मेरी गरीबी की वजह से तुम मुझे छोड़ के गए, पर आज मेरे पास सब कुछ है, तो मैं चाहता हूँ तुम मेरी तरफ से उस दुकान से थोड़े से पटाखे ले लो। अच्छा चल बे। प्लीज ले लो यार, और मुझे माफ कर दो। अच्छा ठीक है, तू इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है तो ले लेती हूँ। मैंने उस दुकान पे 25,000 रुपए जमा कराए, तुमको जो भी लगे वो ले लेना। क्या बात कर रहा है भैया, सबको जल्दी से बिल कर दो। पेमेंट कर दो। पेमेंट को मेरी गर्लफ्रेंड करेगी। ठीक है, कुछ बात हो। बाबू
ऐसी टीम है जो किसी भी मैच में अपना मनचाहा प्लेइंग 11 कभी नहीं खिला सकती। सपोज दैट अगर इंडिया के खिलाफ साउथ अफ्रीका अपनी प्लेइंग 11 उतार रही है तो उस प्लेइंग 11 में कम से कम 2 या 3 काले प्लेयर को रखना ही रखना। ये रूल इतना सख्त है कि मान लो टिम्मा मोहम्मद ने लास्ट के 10 बार में सिर्फ 10 ही रन बनाया तो भी टिम्मा मोहम्मद को प्लेइंग 11 में हर हाल में रखना पड़ेगा। अब आप कहोगे ये कौन सा रूल है? तो ये है साउथ अफ्रीका का कोटा सिस्टम। एक्चुअली जब क्रिकेट की शुरुआत हुई थी तो साउथ अफ्रीका अपने प्लेइंग 11 में सिर्फ गोरे प्लेयर को रखती थी। काले प्लेयर के अंदर कितना भी टैलेंट हो साउथ अफ्रीका सीधे सीधे उनको इग्नोर मार देती थी। बाय द वे कभी कभी अगर किसी एक काले प्लेयर को टीम में जगह दे दी जाती थी तो गोरे प्लेयर सीधा मैच खेलने से ही मना कर देते थे। और सब तो छोड़ ही दो, गोरे प्लेयर सीधा उनका दौरा ही कैंसिल कर देते थे। आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स की होम ग्राउंड चेंज हो चुकी है और विराट कोहली बन चुके हैं आईसीसी मेंस ओडीआई के नंबर 1 बैटर। क्रिकेट के टॉप 3 लेटेस्ट अपडेट लाया हूं, चलो बताता हूं। नंबर 1, आईपीएल 2026 के लिए आरसीबी की नई होम ग्राउंड नवी मुंबई और रायपुर हो सकती है। इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स की नई होम ग्राउंड एमसीए स्टेडियम पुणे हो गई है। नंबर 2, विराट कोहली अब आईसीसी मेंस ओडीआई में 785 रेटिंग पॉइंट के साथ नंबर 1 बैटर बन गए हैं, जिसमें रोहित शर्मा नंबर 3 पर है। नंबर 3, आईपीएल 2026 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स विजय शंकर को मुस्तफिजुर रहमान के रिप्लेसमेंट के तौर पर ले सकती है। आरसीबी और राजस्थान दोस्तों कभी कभी आईसीसी के रूल्स को भी समझना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ उस इंसिडेंट की जब 40 मिनट के लिए मैच को रोक दिया जाता है और बैटिंग टीम को मात्र 2 रन बनाने के मैच जीतने के लिए और स्ट्राइक पे थे विराट कोहली और शिखर धवन जैसे बैट्समैन। दोस्तों बात है 2018 की, जब इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में ओडीआई मैच चल रहा था। इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 118 रन पे ऑल आउट कर दिया था और बैटिंग करते हुए 19 ओवर में ही 117 रन भी बना लिए थे। मैच जीतने के लिए अब मात्र 2 ही रन चाहिए थे, लेकिन तभी अंपायर वहाँ पे मैच रोक देते हैं। बोलते हैं अब 40 मिनट का लंच ब्रेक होगा, उसके बाद ही मैच होगा। सब लोग बोलते हैं भाई 1 ओवर और दे दो, 2 रन और बना देंगे, लेकिन अंपायर बोलते हैं नहीं, आईसीसी का रूल है तो मानना पड़ेगा, खाओ जाने छोले भटूरे। 40 मिनट का ब्रेक होता है, उसके बाद बैट्समैन वापिस आते हैं, फिर 2 रन बना देते हैं। फिर क्या कमेंटेटर, क्राउड और प्लेयर सब यही बोलते हैं अगर क्यों। इसको कभी कभी धुरंधर मूवी ने एक नकली पाकिस्तान बना दिया है पार्ट 1 में। हमने देखा कैसे धुरंधर मूवी बनने से पहले क्रिटिक्स ने बोल दिया था ये एक फेल प्रोजेक्ट है, अपना बजट तो छोड़ो। हाँ। एक 2 तवली लाके देना, एक इधर फटा हुआ था ना, सही है। देख 2 तवली लाके दे, एक ऑरेंज कलर का है, फिर रेड कलर में होगा। ए सत्यम, तू जा, एक तौली दे नीचे से। बोल सत्यम तवली किधर रखा जो लिया था? फटा वाला ये ले। और एक और दूसरा भी होगा यार ले, ठीक है, एक और दूसरा भी दे। ए सत्यम, तौली देना। ये ले। तो बच्चों स्कूल में इलेक्शन है और जो भी इलेक्शन जीतेगा उसकी बात बच्चे ही नहीं टीचर्स भी मान। ये होता है जब आप जॉर्डन्स नहीं पहनते, क्योंकि जब इस लड़की के पास गेम जीतने के लिए फाइनल प्ले का मौका था, तब मिड प्ले में उसका शू अचानक निकल गया। उसके ओपोनेंट को लगा कि वो इसके बिना आगे नहीं बढ़ पाएगी, लेकिन गेम रोकने के बजाय उसने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे अरीना को शॉक कर दिया। ये रोहित शर्मा ने एक बार कहा था कि केएल राहुल हमारा क्राइसिस मैन है, और वो बिल्कुल सच है यार, क्योंकि जब भी इंडिया किसी प्रॉब्लम में होती है तब केएल राहुल हमेशा आगे आ जाता है। 2019 के वर्ल्ड कप में जब धवन रूल्ड आउट हो गया था तो इंडिया का नया ओपनर बन गया था केएल राहुल। फिर 2022 में जब ऋषभ पंत इंजर्ड हुआ तब नया कीपर बन गया केएल राहुल। फिर 2023 के वर्ल्ड कप में इंडिया को नए फिनिशर की जरूरत थी और वो फिनिशर भी बन गया केएल राहुल। और अब जब कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों इंजर्ड हैं, तब स्टैंडिंग कैप्टन बनने भी आ गया केएल राहुल। रोहित शर्मा ने एक बार कहा अगर इंडिया सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बना कर दे तो पूरा गेम बदल सकता है। ऐसे तो देखो भूटान और बांग्लादेश के बीच फंसा हुआ ये सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा रास्ता ही भारत को उसके पूरे नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है। नाम है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और अगर कभी फ्यूचर में बांग्लादेश इस रास्ते को ब्लॉक कर दे तो पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया के प्रैक्टिकली कट ऑफ हो जाएगा। और इस सिक्योरिटी थ्रेट को देखते हुए इंडिया ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास ब्रह्मोस मिसाइल्स, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स और 70+ फाइटर जेट्स डिप्लॉय कर दी है। लेकिन बांग्लादेश ग्रेटर बांग्लादेश बनना चाहता है और बांग्लादेश की एक गलती और ये 22 किलोमीटर का कॉरिडोर 220 किलोमीटर में बदल जाएगा। आपको भी लगता है कि इंडिया को ऐसा कर तो ये बात छूट जाएगी और ये अलार्म कैसे नहीं बजा? अलार्म के भरोसे रहोगे तो ऐसे है। सो आज रहने दे तो स्कूल है, कभी तेरा टेस्ट तैयार करती हूँ। ओ महारानी, बस छूट जाएगी तो कहाँ से देगी पेपर? पक्का किताब नहीं, बहुत बड़ी शर्त। अरे ब्लू यूनिफॉर्म में आज
आखिर कैसा रहा विराट कोहली का रिएक्शन अपने इस छोटे हमसफर से मिलने के बाद? तो देखो भैया, शायद आपको पता ही होगा कि हाल ही में ये बच्चा सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है, जो कि सेम टू सेम विराट कोहली के इस बचपन के फोटो जैसा दिख रहा है। और इस बात को हम सब ने तो नोटिस किया ही था, लेकिन इसे विराट कोहली ने भी नोटिस किया, जिसे मिल करके बनाया खुद किसी बच्चे ने, जिसने इंटरव्यू के दौरान ये बोला कि विराट कोहली भाई मुझसे मिलने के बाद रोहित शर्मा के पास गए और उनसे बोले कि उधर देख मेरा डुप्लीकेट बैठा है छोटा सी। ये कैसा रहा? भाई तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, हमें भी याद कर लिया कर कभी। मूवीज जिनका पार्ट 2 आने में जमाना लग गया। वॉटर 2 आई है पूरे 19 साल बाद और इसका पार्ट 1 1997 में आया था, तब तो मैं पैदा तक नहीं हुआ था। फिर अवतार 1 आई थी 2009 में और उसके विजुअल इतने अच्छे थे कि आज की अच्छी मूवी को उससे मैच नहीं कर सकती, सिवाय हमारी बॉलीवुड मूवी के। फिर एक ऐसी मूवी जिसका पार्ट 2 आने के बाद पार्ट 3 आने में इतनी प्रॉब्लम्स आई है और अभी तक उसकी मूवी के एक्टर्स पिशाब का नशा कर रहे हैं। मूवीज जिनका पार्ट 2 घर में तुम लोग कहाँ बैठेगी ना? हाँ चलो चलो बिल्ली सीट आई तेरा सही है, दोनों के साथ बैठ जाती है ना तू तो। हाँ यार, अब मेरे सभी दोस्त तो सबके साथ तो बैठना बनता है ना। चलो चलो सीट खाली कर। उस लड़के को ब्रेकअप हो गया ना किसी का? खाली का तो ब्रेकअप हो गया। मुझे कैसे पता उसको ब्रेकअप हो गया? मैं इस ग्रुप में हूँ ना इस वजह। अरे हाँ यार, ये तो सबकी दोस्त है। मुझे सबका कुछ पता। और वो जो उसके साथ बैठती थी उसका मुझे 2 साल हो गए यार। ग्रुप प्रोजेक्ट बनाना है, इसमें किसके साथ बनाए? किसके साथ बना? हाँ बता किसके साथ? हमारे साथ ही हमारे साथ। पिछली बार मैंने किसके साथ बनाया? हमारे साथ बनाया था पिछली बार आपके साथ। फिर नेक्स्ट टाइम से तुम्हारे साथ है ना? हाँ चल ठीक है भाई, चली जा जा। ईशा तुम्हारे दोस्त ही बदलते रहते, कल मैंने तुम्हें उस ग्रुप के साथ देखा था, आज मेरे दोस्त ही बदलते। मेरे वही दोस्त है, लेकिन मेरे ये भी दोस्त है और मेरे ये भी दोस्त है। वाह तुम्हारा सही है बच्चे। उसका वो मतलब नहीं था। तू उनकी साइड ले रही, तू हमारी भी दोस्त है। कूल क्या तुम समझोगे इस बात को? मैं उसकी साइड में ले रही हूँ, तुम भी मेरे दोस्त हो, तुम भी मेरे दोस्त हो। उनसे जाके यही बोल रहे हो कि तुम्हारी भी गलती नहीं है। तू ना उनको चूज कर ले या फिर हमें चूज कर ले। क्या बात कर रहे हो? तो मुझसे एक को नहीं सिलेक्ट कर सकती हूँ। कल मैं तुम लोग आंटी प्रिंसिपल मैम, करिए अपनी आंसर शीट चेक। आप बताइए कि टॉपर ने अच्छा किया है या मेरी बेटी? हाँ पेपर तो आपकी बेटी ने ही अच्छा किया है वैसे। नहीं मैम ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ हुई है मैम, मैंने अच्छा पेपर किया। क्या चाहती हो तुम टॉपर? अब तो मैंने टेस्ट ले लिया, प्रिंसिपल मैम ने ले लिया, दोनों बार तुम फेल हुई हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। मेरी बेटी को सब कुछ आता है। नहीं मैम, प्रिंसिपल मैम की बेटी को कुछ नहीं आता मैम, वो फेलियर है, इन्होंने कुछ तो गड़बड़ कर लिया मैम सच में। आप ही देखिए कितनी बदतमीजी दिखा रही है लड़की। अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी ये लड़की अपनी जिद पर अड़ी हुई है, इसका मतलब कुछ तो बात है। मैम कोई बात नहीं है, ये सिर्फ स्कॉलरशिप लेना चाहती है, गरीब है। नो मैम बस लास्ट बार मेरी बात सुन लो। आंची बेटा बोलो क्या सुनना है? मैम आप मेरे कहने से एक बार ओरल टेस्ट ले लीजिए, अपने मुंह से क्वेश्चंस पूछिए, हम सब लोग आंसर देंगे। अच्छा ओरल टेस्ट, अच्छा ओके। मैम ओरल टेस्ट की क्या जरूरत है? इसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने झूठ बोला, मेरी बात मानिए। कोई बात नहीं मैम, अगर हमने इतना सब कुछ कर लिया तो एक बार ओरल टेस्ट भी लेके देख लेते ना, दूध का दूध और पानी का पानी सब हो। इसलिए किसी भी मदद करने से पहले 2 बार सोचे ना, इसमें कहीं आपका नुकसान तो नहीं है, क्योंकि अभी यही हुआ है एसएससी फिटनेस मैच में, जहां फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हुए इंग्लैंड की टीम ने 384 रन बना दिए, लेकिन सेकंड इनिंग्स में जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आती है तब होता है असली कमाल, क्योंकि यहाँ एक ऐसा किस्सा देखने को मिला जिसने बहुत बड़ी डिबेट खड़ी कर दी है, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी अच्छा खेल रहा था और ऊपर से
एक मोमेंट कैसा आता है मैच में जब न्यूज़ बैटिंग करने आते हैं तो उन्होंने अपनी 50 कंप्लीट करी और 50 कंप्लीट करने के तुरंत बाद उन्होंने ब्राइडन कार्स को एक रिक्वेस्ट करी कि अपने सन ग्लासेस को आगे ना रखो क्योंकि उससे इनको दिक्कत हो रही है। तो ब्राइडन कार्स इसको मना कर सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने पीछे की साइड ग्लासेस कर लिए। लेकिन अपोजिशन बैटर को हेल्प करने की वजह से उनको उन्हीं की कंट्री के लोगों ने हेट करना स्टार्ट कर दिया। इसलिए किसी भी मदद करने से पहले लगता बहुत बदतमीज हो रही है तुम। इतना एटीट्यूड किसे दिखा रहा मैं आपको? मतलब तुम टीचर का एटीट्यूड दिखाओ। मैं एटीट्यूड कहाँ दिखा रही हूँ? पहले तो आपने फालतू में बोला ना। और ये तुम्हारे सर में क्या है ऊंचा ऊंचा? सर में ताजमहल थोड़ी है, हेयर स्टाइल है। और ये तुम्हारे मुंह में क्या है? क्या खा रही हो? कहाँ खा रही हो? अभी मैंने देखा कि तुमने निकला कुछ था ही नहीं मुंह में। कुछ होगा तभी तो नहीं होगी ना। ये चुम्मा नहीं है। और तुम्हारा मैथ्स का होमवर्क क्या है? करना भूल गए। अच्छा फोटो में लिपस्टिक लगाना तो नहीं भूल गए। मेरे सामने से तो स्मार्ट बनने की जरूरत। तो कब तक आएगी? ज्यादा रियलिस्टिक नोट बनाने लगे हैं कि हाथ में लेने के बाद तो पहचान ही नहीं पड़ेगी क्या असली है या फिर नकली। लेकिन रियल नोट में अगर मुंबई का राजा रोहित शर्मा है तो मुंबई की रानी है हरमनप्रीत कौर, क्योंकि जब भी वो एमआई की जर्सी में होती है वो अलग ही फॉर्म में आ जाती है। अब तो फर्स्ट इंडियन प्लेयर बन गई जिसने WPL में 1000 रन पूरे किए। गुजरात के अगेंस्ट एक बड़ा स्कोर चेज करते हुए उसने नॉट आउट 71 बनाकर एमआई को मैच जिता दिया। WPL में मोस्ट 50 अब उसके नाम है, सबसे ज्यादा अवार्ड्स भी उसी के हैं और अब ऑरेंज कैप भी उसके पास आ गया है। और उसे मुंबई के कलर्स में देखकर लगता है कि वो हरमनप्रीत कौर नहीं हरमनप्रीत कौर है। अगर बच्चों बताओ 22 प्लस 33 प्लस 55 माइनस के 111। सर माइनस का 1। शाबाश बेटा। हर जगह अपना चेहरा छुपाने वाले फेमस पंजाबी सिंगर तलविंदर का आखिर फेस कैसे रिवील हो गया? देखो वैसे तो तलविंदर अपने कॉन्सर्ट से लेकर हर जगह उनके पेंटेड फेस के साथ दिखता है और तरीके से तलविंदर का रियल फेस उनके किसी भी फैन ने नहीं देखा। लेकिन रिसेंटली दिशा पटानी और मोनी रॉय जब कृति सेनन की बहन नुपुर की शादी से लौट रही थी तब उनके साथ तलविंदर को भी स्पॉट किया गया। हालांकि तलविंदर ने तब भी मास्क लगा रखा था, लेकिन फिर सेम डे इंस्टेंट बॉलीवुड ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें दिशा एक बंदे के साथ हाथ में हाथ डाली थी, जो बंदा और कोई नहीं बल्कि तलविंदर था। अब तलविंदर की शक्ल कैसी है कैसी नहीं ये डिफरेंट मैटर। हरलीन देओल को बाहर बुला लिया जब वो 47 पे बैटिंग कर रही थी। उसके बाद 13 रन बनाए और 5 विकेट लगा दी यूपी ने। मुझे ये डिसीजन समझ नहीं आया क्योंकि इसकी जरूरत भी नहीं थी। पहले कप्तान बाहर जा चुका था, हरलीन बैटिंग कर रही थी और फिर हरलीन को भी तो रनों की जरूरत है ना। पहले 2 मैचेस में रन बने नहीं थे तो कम से कम तीसरे मैच में आते आते अच्छी फ्लुएंसी दिख रही थी। लेकिन सिचुएशन अरे ये क्या दाल चाव 20 साल हो गए शादी को, आज तक सिर्फ दाल चाव खाने को मिल रहा है। अरे कुछ तो यूनिट बनाओ। मुझे तो नहीं पता कि यूनिट क्या है, मेरे पता नहीं। नहीं यूनिट तो मुझे बनाने नहीं आता। लेकिन मुझे बनाने आता है। सच बता तो मुझे तो कुछ भी नहीं, मैं तो इससे भी ज्यादा यूनिक बना सकता हूँ। क्या बात कर रहा है? लेकिन बाबा इससे मेरा क्या फायदा होगा? कुछ यूनिक बना के ला, मैं तुझे 100 रुपया दूंगा। बाबा आप ये जो वीडियो दिखाया ना ये 5 स्टार होटल का है। ये खाने कम से कम 25-30 हज़ार का होगा। अरे साले मैं तुझे 25-30 हज़ार दूंगा। भाई 25-30 हज़ार रुपए नहीं दे सकते तो 1000 रुपए तो दे सकते हो ना। 1000 रुपए दे सकता हूँ पर इससे भी ज्यादा यूनिक होना चाहिए। इससे भी ज्यादा यूनिक होगा। पापा आपके इंतजार का समय खत्म हुआ। नहीं आपकी स्पेशल डे अभी मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा। अरे जल्दी दिखा, इंतजार नहीं हो रहा है। अरे क्योंकि तुम्हें पता है हमें डायमंड्स मिलने वाले हैं जिससे हम अपने सोलमेट को खुद से बना सकते हैं। क्या सच में? फिर तो मैं चाहूंगी कि मुझे बहुत सारे डायमंड्स मिले। क्या सिर्फ 1000 डायमंड्स? इतने में क्या होगा? अरे तुझे कम से कम 1000 तो मिले, मुझे तो सिर्फ 50 डायमंड्स मिले हैं। शॉर्ट सोलमेट के लिए मुझे देने होंगे 100 डायमंड्स और टॉल सोलमेट के लिए 0। अरे वाह मेरे तो पैसे ही बच रहे हैं। ऑफ कोर्स टॉल सोलमेट। अरे निकी तेरे तो एक भी डायमंड्स खर्च नहीं हुए। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा लास्ट ऑप्शन फ्री में निपट गया। वाह यार तू कितनी लकी है, मेरे तो पूरे 50 डायमंड्स खत्म भी हो गए। नो आई एम सो सॉरी यार। अरे कोई बात नहीं, मेरे पास एक ट्रिक है जिससे मुझे बहुत सारे डायमंड्स मिल जाएंगे। ब्राउन आइज के लिए मुझे देने होंगे 0 डायमंड्स और ब्लू आइज के लिए मुझे देने होंगे 500 डायमंड्स। हे भगवान ये ऑप्शन तो कुछ ज्यादा ही महंगा है। पर मेरा इकलौता सोलमेट बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, इसलिए ब्लू आइज। टॉक्सिक सोलमेट के लिए मुझे देने होंगे 0 डायमंड्स और लॉयल सोलमेट के लिए 250 डायमंड। हे भगवान इन लोगों ने तो लूट मचा रखी है, पर लॉयल्टी पर तो खर्च करना ही पड़ेगा। सिंपल सोलमेट के लिए मुझे देने होंगे 0 डायमंड्स और बिलियनियर सोलमेट के लिए मुझे देने होंगे 5000 डायमंड्स। अब मैं क्या करूं? मैं 5000 डायमंड्स कहां से लाऊंगी? क्योंकि तुम्हें एक सब्सक्राइब पर 1 डायमंड मिल सकते हैं और इसी हाँ भाई तो तुरंत टॉक्सिक के क्रैश के बारे में कुछ। मम्मी हे भगवान जब वो तेल क्या समझ में वो टेस्ट इतना तेल कैसे आया मेरे सर में? बेटा तेरे को गंदी चुड़ैल बनने से बचा ले। पूरे घर में तेरे बाल घूम रहे हैं, ऐसा नहीं सर में तेल डाल। तू सामने वाले से पूछो ना, कोई सो रहा है आपने तेल डाल दिया उसके सर में। राती बड़ी तू कोई हुई नहीं कि तेरे से पूछ के काम कर। कभी कॉलेज जाना है जाना, मैंने क्या रोका है? अरे तो इतनी ठंड पड़ रही है, सुबह सुबह में बाल धो। नहीं आज बाल नहीं धोना। क्यों? ट्यूसडे है आज।
बनता है कि स्टिक से नीचे रखी डिस्क पर हिट करता है तो ये रॉकेट की स्पीड से हवा में उड़ जाती है। दरअसल ये एक फेमस स्विच गेम है जिसे फार्मर्स बॉक्स कहते हैं। न्यू अपडेट गेम के अंदर आ चुका है, बट हम सबसे पहले ये देखेंगे कि पटाखा शॉटगन का क्या हुआ। तो ट्रेनिंग के अंदर चेक करके देख लेते हैं पटाखा शॉटगन। 1 2 3 पटाखा शॉटगन का घेरा खत्म। अब हम MP5 चलाएंगे। बाइसन का अपडेट आ चुका है। ये बंडल अपने को बिल्कुल फ्री में मिलेगा। यहाँ पे एक फ्री का स्ट्रिप था जिसके अंदर अपने को कुछ नहीं मिला, और इसके साथ बहुत सारे न्यू अपडेट आए हैं, न्यू कैरेक्टर आया है। सारी चीजों को हम बारी बारी टेस्ट करके देखेंगे। न्यू अपडेट गेम के अंदर आ चुका है। इस मैच में आरसीबी ने मुंबई को लास्ट बॉल पर हरा दिया। इस वजह से एमआई फैन थोड़ा दुख हुआ, पर इस बात की खुशी थी कि स्मृति मंधाना की आरसीबी जीत गई। वर्ल्ड कप जीतने के बाद विमेंस क्रिकेट अलग लेवल पर पहुंच गया है। जितना सपोर्ट लोग आईपीएल में करते हैं उतना ही WPL में दिख रहा है। लास्ट बॉल फिलर्स यहाँ भी देखने मिल रहे हैं, और ये विमेंस क्रिकेट की जीत है। जैसे इस मैच से दोनों टीम्स के फैंस खुश होंगे। आरसीबी फैंस इसलिए खुश होंगे क्योंकि उनकी टीम जीत गई, और एमआई फैंस इसलिए खुश होंगे क्योंकि उनकी परंपरा चलती रहेगी। इस मैच में आरसीबी ने मुंबई को लास्ट बॉल। इनकी राइटिंग दुनिया में सबसे ज्यादा परफेक्ट है, मजाक नहीं कर रहा। नासा से लेकर नाइकी यहाँ तक कि एप्पल भी अपने लेटर्स को डिजाइन करने के लिए मशीन से ज्यादा भरोसा इन पे करते हैं। इनका नाम है सैम लेटर, दुनिया के नंबर 1 कैलीग्राफर। इनका एक एक लेटर मैथमेटिकली करेक्ट है। स्ट्रोक की विड्थ से लेकर स्पेसिंग, एंगल, कर्व सब कुछ परफेक्ट मिलेगा। ये पेन इतना एक्यूरेसी के साथ घुमाते हैं कि मशीन भी इतनी गलतियां नहीं पकड़ पाती। इसीलिए बड़े बड़े ब्रांड जिनको अपने लोगो डिजाइन करने में टॉप क्वालिटी का काम बिना किसी गलती के चाहिए, वो इन्हें कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। इनके खुद के काफी सारे फॉन्ट्स आपके फॉन्ट में भी है, कुछ भी नहीं, तो इनकी सैलरी 10 करोड़ रुपए पर ईयर से भी ज्यादा है। इनकी राइटिंग दुनिया में सब टॉप 3 अश्विन अंदर की कॉपी हरकतें, रन आउट जहां बॉलर बिना बॉल डाले ही विकेट ले जाते हैं। नंबर 3 या मैन के रन आउट के साथ दिल को तोड़ के जोड़ने वाली स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी देखने मिलती है। हसन महमूद बॉल नहीं डालते, शार्ट पट्टी करते हैं, नॉन स्ट्राइकर को रन आउट कर देते हैं, लेकिन बल्लेबाज बेचारा गुस्से में जा रहा होता है, तभी बांग्लादेशी कैप्टन लिटन दास स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए वापस बुला लेते हैं। ये दीप्ति शर्मा का मोस्ट कंट्रोवर्शियल रन आउट, जहां लोग उन्हें ही बुरा बोल रहे थे। जब इंडिया को जीतने के लिए 1 विकेट चाहिए था, वहीं न्यूजीलैंड को 39 बॉल में मात्र 17 ही रन चाहिए थे, तभी दीप्ति शर्मा ये हरकत कर देते हैं जिससे इंडिया तो जीत जाता है, साथ ही लगान का बदला पूरा हो जाता है। फाइनली नंबर 1 कार्यक्रम को खत्म करते हैं अश्विन अंदर की ओजी मैन गेट रन आउट से, जहां 69 रनों पे बैटिंग कर रहे जॉस बटलर को अश्विन आइकॉनिक स्टाइल में रन आउट कर देती है। टॉप 3 क्यों मारी मेरे छोड़ को? हाँ तो उसने भी मेरा टेडी बियर की आँख निकाल दी। और साक्षी ने मेरा खिलौना तोड़ दिया। मेरी छोटी सी चीज़। तेरे चाची को बोला कि नहीं बोला? बोला मैंने, उसने मेरे को ही डांटा और भगा दिया। जी मम्मी। वाह भाभी वाह, अब तो ये नहीं दिखा कि इसने मेरी बच्ची को भी रुलाया है। हाँ तो मुँह से भी बात कर सकती है ना वो? मैं हाथ कैसे उठा लिया? तो आपसे कोई बात नहीं करनी भाभी, मेरे को तो बस आप घर रखिए। तो अंकल चाहिए रहना कि बंटवारा हमको भी शांति हो। दिन भर में तुमसे और तुम्हारी बच्ची तो परेशान हो गई हूँ। बिल्कुल आपको बालों के साथ घर में रहना ही नहीं। अभी इनके पापा को आता गुस्सा करवाओ, अलग हो के झूठों से लड़ रही है लोग। एक काम करके मैं गुड्डा को दिख के छत पे जाके हाथ हम लोगों को जानता हूँ। हटो क्यों मारी मेरी? जिस पिच पर कुलदीप यादव 134 बॉलें खेल जाए, जिस पिच पर मार्को यंसन 93 रन बना दे, जिस पिच पर मार्को यंसन बाद में 6 विकेट ले जाए तीसरे दिन, वहां हम 201 हो जाओ। इस पिच पर कुलदीप यादव 134। लोकल क्रिकेट में बहुत सारे प्लेयर्स अपने बैट को नॉक करते हैं, लेकिन कभी आपने किसी बड़ी इंटरनेशनल क्रिकेटर को बैट नॉकिंग करते नहीं देखा होगा। बट क्यों? देखो सबसे पहले जान लेते हैं कि बैट नॉक क्यों किया जाता है। दरअसल जब बैट प्रैक्टिस से नई बन के आती है तो बैट कंप्रेस नहीं होती, खास करके बैट की एज है। इसलिए बैट 6-7 घंटे लगातार नॉकिंग करने से इसके फाइबर कंप्रेस होते हैं और बैट जल्दी टूटती नहीं। साथ में बैट की टाइमिंग एकदम जबरदस्त हो जाती है। और हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी ऐसा करते हैं, पर खुद से नहीं बल्कि एक्सपर्ट से या मशीनों से। लोकल क्रिकेट में बहुत सारे प्लेयर्स। मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ कि 2025 भले ही खत्म हो गया, पर उस साल रिलीज हुई कुछ बुरी मूवीज के ये 5 बहुत ही ज्यादा बुरे डांस मूव्स अगर तुमने आखिर तक सर्वाइव कर लिए, तो सबसे ज्यादा लाइक हुई कमेंट में लिखी एक सबसे क्रेज मूवी मैं पूरी देखूंगा। तो आखिर से शुरुआत करते हैं अजय देवगन का आज तक का सबसे हाई एफर्ट डांस, जो अपने टाइम के पूरे 100 से 200 साल आगे है। सन ऑफ सरदार के ये लेजेंडरी उंगलियों वाला स्टाइल। उसके बाद आता है अपने सल्लू भाई की मूवी सिकंदर के गाने सिकंदर नाचेगा, रश्मिका को लेट के लात मारने वाला भाई का ये डांस है। लेकिन उसके बाद नाटू नाटू के डांस की सारी थकान उतारते हुए गेम चेंजर मूवी के इस गाने में जवानी उछालते रामचरण कुछ ऐसे दिखते हैं। फिर आता है रॉबिन हुड मूवी का ये डांस नंबर, जिसके आते
नहीं, सब बच्चों की आंखें बंद करवा दी गई। आदि द सरप्राइज सुनना ये वाहियात स्टेप। आखिरी वाला जिसे देखकर खुद ऋषभ पंत ने भी शर्म से अपनी नजरें नीचे फेंक ली होगी। उर्वशी रौतेला ने ये सॉन्ग फरारी। मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ। ये रहा आपके लिए एक नया फूड पेंटिंग है। चलिए आजमाते हैं। पहला कदम कटोरी में अपना पेंट निकालें। दूसरा अपनी रस्सी काटें। तीसरा अब रस्सी पेंट में डुबो। यार इंडिया के क्रिकेट लेजेंड्स के बच्चे फ्लॉप हो गए, लेकिन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के बच्चे बन गए सुपरस्टार। देखो सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर और रॉजर बिनी, तीनों के बेटों ने क्रिकेट में ट्राई किया और तीनों ही पूरी तरह से फेल हो गए। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर इंडिया के लिए डेब्यू नहीं कर पाए। आईपीएल में कुछ मैचेस मिले, लेकिन वो जगह पक्की नहीं कर पाए। इसके बाद रोहन गावस्कर ने सिर्फ 11 मैचेस ही खेले और फिर वो गायब हो गए। और स्टुअर्ट बिनी ने भी इंडिया के लिए मैचेस खेले, लेकिन फिर वो टीम से बाहर हो गए। आप जरा ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखो। लिल मैक्सवेल के बेटे ग्लेन मैक्सवेल, जिन्हें दुनिया में बिग शो कहती है। साइमन हेड के बेटे ट्रेविस हेड, जो एक ही साल में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप फाइनल दोनों में मैन ऑफ द मैच बने। और जॉन मार्च के बेटे मिशेल मार्च, जो आज ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन है। यार इंडिया के क्या हुआ? या दिखाई देंगे, ठीक है? घटिया कैप्टनसी, घटिया स्ट्राइक रेट, कुछ कोहली का ये भी 7 रनों से क्या चूकी। लोगों ने काइल जेमिसन के कमेंट सेक्शन में जाके उनका पूरा परिवार याद कर डाला। खाओ माँ कसम। उनकी सेंचुरी ना बनने पर भी 1 हफ्ते तक बिना खाना खाए अनशन पर बैठने वाला है, तो कोई मान हाँ, कुछ नहीं। बाथरूम जाओ। कौन आ रहा है? दादी, ये चिंदी दिए। आसिफ आया था, चिंदी देके गया। चिंदी दिए। क्या पापा? नहीं, 12 बजे तक आएंगे। बोल रहे हैं पापा, मम्मी है इधर?
जा रे, ए जा इसको खाओ दिला के। है भैया को भेज रही हूँ, जा रे क्या? खाओ दिला के उसको। किसको? गौरी पैसा लो, मैं आ रही हूँ, पैसा लो मम्मी से। आई बोल दीदी, बोलो कल रात को दीदी दी थी ना, अभी आप दो, चलो। आपकी मम्मी का ही मांग लीजिए। क्या पैसा नहीं है? मम्मी का चूड़ी मांग लो, चूड़ी मांग लो, जाओ। क्या पैसा नहीं है? पैसा नहीं है तो कैसे जाएंगे? दादी को बोलो दे दो। दादी को बोलो पैसा दो। वो चाची से, वो बड़ी चाची से मांगो, जाओ। सत्तम ने मम्मी से लेकर पैसा, जाओ। नहीं तो रिद्धि की मम्मी से मांगो। हाँ अरे कौन है? अरे कौन है बे? मस्ती कर रहा है बच्चे। तकलीफ अक्ल लगी और कर लो मस्ती। लगा उसको पैर को। कहाँ लगा गौरी? बताओ बताओ कहाँ लगा? खड़े रुको, मैं अभी ये कर रही ना, चलते चलते हैं, रुको। अरे उसको लगा दीजिए पैर पे। अभी ठीक हो जाएगा। जाओ मम्मी से तेल लगा दो, जाओ जाओ, मैं खाओ लगा, मैं अभी आ रही हूँ। देखो जू काटी मेरे को, वो जू काटी। तुम भी नहा लो तब तक, गौरी जाओ। नहा लो। हाँ नहा लो, ब्रश कर लो।
चल रही हूँ। क्या हुआ गौरी? देखो कुछ कर रही हूँ ना मैं। देखो कार्टून, देखो कितना कार्टून निकला है, देखो चेक करो, मारो। जी रुको। गौरी ना ये देखो कार्टून एक तो जरा। ये को झूरा डलवाना है देख कितना बढ़िया है तो मैंने एक टूट से लेने की ये कौन छुपा है? ये कौन है? ये कौन है? तो देखना है। ये तो गोली। हट जा दीदी, मेरे को ना दे। लाइट कोई जरूरत नहीं है लाइट आने का, ऐसे नहीं कर पा रहे ताई देखो।
Yeah, that's okay. Yeah. साबुन नहीं लगाया ना? लगाया। साबुन लगाया ही नहीं तू दादी? ए दादी लगाया होगा। साबुन में और क्या था दिखा? पता क्या था तू? साबुन ए दादी साबुन में ना लगेला। अरे लगाया हूँ देख ले ना लगा है मारून की भाई वो रखी वैसे अरे किल्ला है चल बेटा जल्दी से ठंडी लग चटाई बिछा अरे मम्मी को दो।
ले रस्सी ए गौरी घर में चटाई बिछा दूं हाँ चटाई बिछा दूं घर में इधर ये बिछा दूं इसका ले लो मेरा ले लो दादी आई क्या करा चटाई तो मैं जुगाड़ रख लेने हमें चटाई निकाल के देवे लक्ष्मी जोर लगल बटे और चटाई यहाँ रखी थी तेरे के काय बन के देले रे हम ना बन गई अब ते ही निकलने का बन कुछ ना करी तो अभी निकाल के देते हैं ये बिछा देते इस पे बैठो हट बैठो गौरी आई के कर नाम में देते वही कैसे बस बिछावता ये थी अरे बिछा तो है के ये नहीं क्यों चटाइया ना चटाई लेके बिछाओगे नीचे है ना हाँ नीचे चटाई होई बिच्छू ना की चटाई ला तो धो ले नहीं कल के धोल ओ चाची चटाई दो गन्नू को बिछाने को नया वाला बिछा दिया दी हाँ नया वाला बिछा दी हाँ बिछाना लाइट बंद कर हर हर महादेव राधे 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 रुको रुको ये बिछावना है ना रे ओढ़ना है नहीं नहीं दब हाई 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 बिछावना है ला हाई ओढ़े के Don't bring me down. गन्नू नहीं कहाँ लिखल बा देखो सरोज नहीं दूसरा सुप्रिया यादव सुप्रिया यादव जब से लागल तब से 100 हो गए रहे छठी को हटाएगा रे हाँ दादी तू वोट दे के आ गई बड़ी दीदी तू वोट दे के आ गई वोट दे के अभी नहीं देना रहता कहाँ देना है रे दीदी को मालूम एक मिनट करने दोगे सिर्फ एक मिनट और कुछ कहे मामा जी नानी नानी तेल लगा दे आकार वही कपड़वा मोल
दादी पैसा दूध लाना है। दादी के पैसा दूध लाना है। पैसा देंगे 500 कहाँ बा देखो क्या माने बच्चे दे ले रहे थे। ओ चाची, दादी बोल रही रात को 500 रुपए दीदी क्या की? दीदी जो मम्मी से वरना ए दीदी मेरे लिए 5 रुपए का लेके आना। ए दीदी, हाँ मेरे मम्मी को दिया था। अब क्या बोलते मेरे लिए 5 रुपए का लेके आना। Don't bring me down. कितना हो? 10 बज रहा है ना दीदी। रात के 10 बजे। रात के 10 बजे। हाँ तो तुम आपको सेव कर दो। भैया हल्दी नमक डाला तो कम ना। भैया भैया खा तो कम ना। क्यों बतावले नहीं बोल दी। बतावे के चाहिए ना। अब वो निकल गई वही में। एक भी फोड़ना नहीं बेटा। देख नहीं आया।
गेली ना बोलते ले सच में मेरा एसएस का पेपर बहुत अच्छा है बहुत ज्यादा ही अच्छा है बहुत अच्छा है इजी था ही नहीं अभी कम है अभी 9 हाँ खत्म हो गया सबका 15 ना 3 दिन हो गए नहीं पढ़ता है तो देखती हूँ अपना ट्यूशन में जाके देना करता हूँ आज कुछ पढ़ाया भी नहीं है अभी सब सिर्फ एनुअल डे का चालू है और वो और उसके आगे भी करता हूँ ना आगे बेटा सोच रहा हूँ हाँ अभी अभी चला तो मैं कुछ एक तो पढ़ाया नहीं ना तो मैं अभी से कंप्लीट करके रखूंगा जब चीजें पढ़ाएगी तो मैं बस वो करना रहेगा क्वेश्चन आंसर चीजें को बनाने का इसलिए इसको बात है कि जैसे मैं टेस्ट देने जाऊँगा अभी कंप्लीट कर सीधे तरह से हो जाएगी ये जूम पर जरा तब हो जाए देखो रही बार अच्छी लग पतला बहुत पतला आई रस कहीं नहीं रस्सियों में से उन्हें निकाले नहीं सारे सीधे बेकारी रस्सी लाई सीधा सी के धारे सोच काट कर रस्सी दूर रस्सी हमारी में से रस्सियाँ निकाली सीधे और ये खोल लेना तकिया एक जो है सी एक सियाले बनाई वो इधर छोड़ कर ये छूट ही जाता है
पेंटर छूट जाता है, खराब हो जाता है। ये छूट जाए ठीक है। वो दिन में शुरुआत ना वो कहाँ बा हमरे थैलिया में अकेले ले लो तो ना मालूम पर थैलिया में डाल। तो मैं सोच लगे हाँ ये दे रस्सी मैं जोड़ा हूँ कने खाली एक ही के बना रहे होते दादी 500 रुपये में से 1 लीटर दूध, 1 लीटर गोकुल, आधा टमानंदा और एक कुरकुरे। चलो वोटिंग देने चलो जल्दी। चलेंगे खिलाने। क्या ओढ़े नहीं पाई हो दादी रस्सी दिए। पानी गर्म वाले दिन था ना क्या पे एक ही बैठ लेगा एक तो सही। अरे भाई करना मंगा पानी पानी
क्या लिखले बड़ी है लग एक एक सोनमती बहन देखो तो फ्रेंड में मेरा 150 हो गया। अच्छा मेरा कमेंट पढ़ो सोनमती। मोबाइल ऑन करके रखी थी इसीलिए तुम्हारे लाइक में मेरा 2 घंटा हो गया। सोनमती बहन पढ़िए। 2 घंटे हो गए। कमेंट देख लो। कुछ खाएगा गणेश? बिस्कुट खाएगा तो मंगा लो। हर हर महादेव। राधे राधे।
जय श्री राम। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जय श्री राम। गौरी गिर गए, गौरी गिर गए, गौरी पागल, गौरी पागल, गौरी पागल, गौरी पागल। रे हाँ क्या कर रहे थे भाई ना खुले ना था ये कचड़वा वाला और ये ऊपर टांगा गहू बेचे चलो
बोली बोली छुट्टी है यहाँ हम लोग की छुट्टी बोली नहीं कल छुट्टी टीचर से क्या मम्मी 5 रुपए दे रहा हूँ नहीं बोले तुम लोग चलना तो चलना नहीं तो मेरे को छोड़ के मत जाना छोड़ के नहीं जाओगे ना पता नहीं बोले बजे तक सोता हूँ आज मुझे 11 बजे चला छोड़ के नहीं जाओगे ना हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। और कहाँ से हो? हमारे लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब जरा लिखिए कहाँ से हो। मैं तो बम्बई से हूँ। हम बम्बई से हूँ। आप कहाँ से हो? इसके पहले भी आपका कमेंट आया है। लिखिए ना, हर हर महादेव, राधे राधे, राधे राधे। डिया से आप इंडिया से हो।
इंडिया से तो मैं हूँ। इंडिया से तो मैं हूँ, लेकिन इंडिया में कहाँ? मैं तो इंडिया में हूँ, इंडिया से हूँ और इंडिया में हूँ। और हमारा जिला है देवरिया जिला, और बम्बई में हूँ। आप कहाँ से हो? आप आई कमेंट लिखी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। हरियाणा, हरियाणा से। अच्छा, हरियाणा से। हरियाणा से। हरियाणा में गई थी, 2 साल हुआ। वो हमारा भतीज रहती है, भतीज दामाद रहते हैं उधर ही। वो कहाँ तो पता पाते नहीं, हमको मालूम है। ध्यान ही नहीं है। एक दिन गई थी, उधर रही एक दिन के बाद दिल्ली चल गई, और दिल्ली 2-3 दिन रही, नोएडा में। दिल्ली नोएडा में मेरे भतीजा रहता है। मैं कुछ करती नहीं हूँ, घर में बैठी हूँ, कुछ नहीं करती। क्या करूँ, इसी में लगी हूँ कि क्या मालूम यूट्यूब में मैं सफल हो जाऊं। लेकिन ऐसा लगता है बहन कि क्या बताऊं, कोई हमारे लाइफ में जुटते ही नहीं है कि क्या मालूम क्यों। आप तो कभी से हो, आपके कमेंट पहले भी मैं पढ़ी, आप किया है। मैंने हमारा सपोर्ट कीजिए, दर्द आके। हरियाणा से हो? हरियाणा में कहाँ बहन? हरियाणा में कहाँ से? हरियाणा, पंजाब, उधर ही तो है। अच्छा, आपका नाम है क्या, जरा लिखिए। पानी पंप, पानी पानी कल लिखे हैं क्या? पानी मेरे को चश्मा बनवाना पड़ेगा, क्योंकि छोटा छोटा अक्षर ना थोड़ा कम दिखता है। सुप्रिया, सुप्रिया बहन, हमारा सपोर्ट कीजिए रोज आके। आपको चैनल अगर है, आप लाइक करती हो तो हमको बता दीजिए, आपकी में मैं आऊँगी। आप लाइव करती है? लाइव करती होगी तो बताइए चैनल का नाम, मैं आऊँगी।
हर हर महादेव, हर हर महादेव, राधे राधे। नहीं, अच्छा, आपका चैनल नहीं है? आपका चैनल है ना? यार लिखिए चैनल है कि नहीं, कैसे तब किया है? चैनल रहेगा तो ही हो सकता है। आपको कोई कमेंट नहीं करता। हाँ, ये तो बहन सही बोली। हमको कोई कमेंटे नहीं करता है। आएगा उधर ही से चले जाएगा, लाइक भी नहीं करेगा। आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और आप 10 दिन आइए। आपको कोई कमेंटे नहीं करता है तो सही लिखी, बहुत सही। बहुत सही लिखी आप। अरे एक है खेत में तो 50-50, 20-20 जुटे रहते हैं। वो कमेंट आदमी पढ़ नहीं पाता है, तभी लिखते जाते हैं। लेकिन क्या हमारा नसीब ही खराब है। मेरा आदमी भी नहीं है। मैं सोची कि क्या मालूम इसमें थोड़ा सफल हो जाऊंगी तो हो जाएगा सहारा। अपने पहचान वाला तो और नहीं करते हैं। शुक्रिया बहन। अपना जो है ना, अपना जो पहचान वाला है वो तो और नहीं करता है। वो सोचता है जो करेंगे तो इनको फायदा हो जाएगा। आप कर देगी, दूसरा कर देगा, लेकिन अपना जो पहचान का है, आजू बाजू हित ना तो जानेंगे, सोचेंगे अरे इसको पैसा आ जाएगा। अरे पैसा आएगा तो तुम्हारे घर से नहीं ना आएगा, गवर्नमेंट ने देगा। भगवान करे सबको दे। क्या बोलो। और बहन आपके कितना बच्चे हैं? आऊंगी मैं उधर। मेरे भतीज बुला रही है कि फुआ एक बार और आओ। आऊंगी आपके इधर, लेकिन नंबर रहेगा तो ही आपसे मिल पाऊंगी, नहीं तो आप हरदम आती रहेगी तब आपसे मिल पाऊंगी। मेरी शादी नहीं हुई। हाँ, अभी शादी नहीं हुई है। कितना उम्र है बहन? और सर नेम बताओ ना, सर नेम। अगर इधर कोई लड़का है तो हम बताऊं। अच्छा लड़का, पढ़ा लिखा, नौकरी करता रहे। अच्छा, अभी शादी नहीं हुई है। 22, बहुत अच्छा उम्र है। ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है। ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है। 22, 23, 25 में तो होना ही चाहिए शादी। अच्छा, आपका सर नेम क्या है?
यादव। अच्छा रुको, मैं सोच रही हूँ। यादव, यादव, यादव। अच्छा, आप कितनी पढ़ी हो? एक हमारे पास यादव का लड़का है। आए, आपका जिला कौन है? वो वकील है। उसका भी हमके लगता है कि उम्र 27-28 तो होएगा उसका। 27-28 होगा। वकील, वकील का कर लिया है, अभी ज्वाइंट नहीं हुआ है। वकील की पढ़ाई किया। उसका घर का वो लोग घर का काम करते हैं। उनके भाई है, 2 भाई है। एक का शादी हो गया, ये छोटा है, और उसके माँ बाप है। इधर भांडुप में रहते हैं, बम्बई में। आपकी पढ़ाई कितना हुआ? मेरी मेरी फोन या नहीं है। आती आती हूँ। पहले वो बताओ ना अपना पढ़ाई। वो वकील है तो उसको पढ़ना, ज़्यादा पढ़ाई उसको भी चाहिए ना। अगर आपका पढ़ाई होएगा ना तो मैं उससे जमाती हूँ। वो आजमगढ़ का है, बम्बई में रहता है लोग। हमारे बाजुए में है लोग, लेकिन अभी यहाँ का रूम छोड़ के फ्लैट में गए वो लोग। हम लोग तो झोपड़े में है, वो लोग फ्लैट में गए। आप अपना पढ़ाई बताओ ना। सुप्रिया बहन, बहन नहीं तो मेरी बेटी है। तो मेरी बेटी है। मेरा 3 लड़का है और एक मेरी लड़की है, शादी हो गया उसका। हमारे लड़का लोग का भी तीनों जाने के शादी हो गया है, और मेरे लड़की का भी शादी हो गया। हम लोग विश्वकर्मा है। पढ़ाई नहीं किए क्या? आजकल कोई बगैर पढ़े हुए नहीं रहता है। आप बताओ, पढ़ाई होएगा ना तो बहुत अच्छा है लोग। घर का वो लोग ऑफिस खोले हैं, फ्लैट लेके। हेलो सुपुरिया बेटी, बताओ जरा, पढ़ाई बताओ। कम पढ़ाई रहेगा तो दूसरे देखेंगे। और अपना फ़ोन नंबर दो, और नहीं तो हमारा ले लो। हमारा फ़ोन नंबर ले लो, मैं दे देती हूँ।
अभी कमेंट करो, अभी क्यों रुक गई सुप्रिया? नहीं लिख रहे। अच्छा ये बताओ, नहीं लिख रही, ये बताओ हमारे बिरादर में है उधर क्या विश्वकर्मा? हमारे बिरादर में विश्वकर्मा में उधर है कोई लड़का? सुप्रिया सुन रही हो कि चले गई? चले गई। पढ़ाई नहीं हुआ है वो भी लिखो ना, पढ़ाई नहीं हुआ वो भी लिखो कि नहीं पढ़ाई हुआ। वैसा भी लड़का मिलते हैं, ऐसा नहीं है। चलो नहीं बताएगी तो चली गई। बहुत अच्छा लिखी लेकिन चली गई, क्या करें।
अच्छा अभी खत्म हो गई।
तो मैं दी थी खाए ले इनको मुझे खाते वो रॉकेट है और रॉकेट और टाइगर वो किधर से हमने वो पकड़ दे कौन सा नाम है
कहाँ? वोट देने की जय माता। चलो दे लो। अबे टाइम जा 12 बजे। छुट्टी बा भैया का ओटवा से।
हर हर महादेव। राधे 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 राधे। कमेंट में लिख के बताइए ना।
सही है मानो तुम सही है इसलिए कुछ भी नहीं है आओ जल्दी आओ जीतना है केस नंबर 76895 शाजिया बानो बनाम अब्बास खान। अब्बास खान ने शाजिया बानो को बेसहारा छोड़ दिया अदालत ने अपने और अपने बच्चों के गुजारे के लिए 400 रुपए तीन बार तलाक शाजिया बानो को तलाक दिया तलाक की फितरत इस्लामिक ट्रेडिशन के खिलाफ है मौलाना मौदूदी जैसे कई मुस्लिम उलेमा ने कहा है कि तलाक की फितरत इस्लाम का हिस्सा नहीं है Objection, Your Honor. पहले मैंने कहा था कि ये लेकिन अब मैं अप्लाई बदलता हूँ। This is dangerous and malicious. शरीफ का मामला अब इस कोर्ट में सीरियस केस है। मुझे बदनाम करने का। शाजिया बानो और मेरा आज से 3 महीने पहले तलाक हुआ। अब ये मेरी बीवी नहीं। योर ऑनर शाजिया बानो अभी भी अब्बास खान की बीवी है इसलिए सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस की मांग कभी भी जायज है जिस तलाक की बात कर रहे हैं तलाक लागू नहीं होता है तो आप कह रही हैं कि शरीयत के तरीके से दिया गया तलाक लागू नहीं। योर ऑनर अब्बास साहब न्यूसेंस केस है। मुझे इलेक्शन सिस्टम ये नाजुक मामला है मेरा। एक मुस्लिम मुस्लिम हम ये फैसला नहीं कर सकते कि मेरी क्लाइंट का तलाक की फितरत की Objection, Your Honor. आपकी क्लाइंट कोई हाफिज है या कोई आलिमा है? This needs to stop now. Objection sustained. Hold your contempt. एक साथ में 3 बार तलाक लेना कैसे सही हो सकता है सर आप बैठिए, सही है। बहुत सारे इंटरप्रिटेशन में सही माना गया है। आप अपने डिस्कशन में शरीयत के तरीके से पढ़ा ही नहीं है सर इन्होंने कुरान पढ़ा ही नहीं है और शरीयत बोल रही है हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है उसके बाद आप जो फैसला करें 3 बार तलाक बोलकर इन्होंने हमें तलाक दी लेकिन उसे कायम करने के लिए जिसने ऐसा करा है उसे कोड़े पड़ने चाहिए अब्बास साहब, आप objection बोलेंगे कि नहीं? Objection, Your Honor. आप चाहते हैं मुझे छोड़े? हम नहीं कह रहे हमें कहा गया है तो फिर आपने ये बात address the client. अदालत में आप बोल रही हैं कि मुझे कोड़े पड़ने चाहिए। बानो बेगम, आप बैठिए, आप बैठिए। इस कोर्ट में तलाक के बिदअत का जिक्र नहीं हुआ। Is it clear? नहीं तो आप जेल जाएंगे। समझाइए अपने client। मसला लो और secular लो, आप एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करो। And I agree with Mr. अब्बास खान। ये बहुत dangerous है। अगर यही बातें करते हैं कि आपने, मैंने शुरू में कहा था कि अपने लोगों के पास जाइए। आप कहीं यहाँ आ गए? आप लोग अपना केस मुस्लिम लोग मौलवी साहब, ये आपका मसला है। इसे आपस में सुलझा लेना चाहिए था। आपको बुलाना है। आपको मालूम होना चाहिए था कि इस तरह तलाक के मामले में अदालत में ले जाना हमारे लिए शर्म की बात है। तलाक के बिदअत जैसे मसले उठाने से गुनाह है। तो गए थे आप एक साथ केस हमने दर्ज किया है तो उससे बात करें और पूछिए काजी साहब से कि हमारे अब्बू उनके पास आए थे कि नहीं काजी साहब के फैसले से आप नाखुश थी तो कोर्ट चली गई। खुदाए बाप के फरमान के खिलाफ आप अदालत में लड़े। अदालत में जाने का मतलब था शरीयत को नकारना। आप शैतान का साथ दे रही हैं। खुदा पाक के फरमान को समझते हैं उसे नजर
लोग कर रहे हैं खुदा के फरमान पर क्यों नहीं? जब एक काजी अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करे तो करना पड़ता है। मौलवी साहब, इस औरत को चुप करवाएं। बच्ची का नाम बालो है। हम खुदा के नुमाइंदे हैं। इसको पकड़ नहीं। खुदा के नुमाइंदे हैं, खुदा ने हम खुदा बनने का दावा करते हैं, यही कुछ है। नाज आप लोग कर रहे हैं। माफ कीजिए, और देवे जाते हैं हाँ जय और देवे के लिए लोग चलो चलो हाँ चलो सब लोग तलाक के तरीके और शर्तें 12 तो बज तलाक को गए 3 महीनों की मुद्दत में दिया जाए। कहत रही 12 सूरत अल-बकरा में लिखा है कि शोहर और इमली को भी साइन पर दे उठा लिया। जाकर देखा इनके सामने मन से होगा कोई ना सीजन चलाओ इनके सामने ऊपर जाके वोट दे के आ गए सब अपनी बन के जा रहे देख रहे हैं गाँव में तो फाटा वाला तो सीबे ना कर जो दिन डालियन का दिन ना लेकिन गई कहीं कोई नहीं रतिया बड़ा कहाँ सोचता है खुदा गुस्साए लगे ला लोग पहले बहुत के सीखे के लगे रतिया बड़ा सोचता है इमली सा उनका दिन भूल गया ये पहन के जब कहा अच्छा मोबाइल लेके आ लो दादाजी आप मुझे ही हाँ। जाना होगा तेरी भी छोड़ दो दुकान ले ले इमली दादी 10 रुपए देना 5 रुपया 5 रुपये देना बाहर के ना खाए की खाने का सामान ले आओ तुम बंद रही थे टाइम तेल तरफ पे आओ ना तेल 1 लीटर वगैरह देना दादी साबुन नहीं खाना दादी देना नहाने वाला पूरा ना आ सकता है ना खाली ना बनाई खाओ तो खाए तो पेड़ जो बनाए दादी देना दादी दादी 5 रुपया दादी 10 रुपये कहाँ से करेगा कितना है और देवे मोबाइल में टिलगुड़ और कुछ ना लाते अरे मनाही के नहीं तो का ले वो गुस्सा तो वैसे गुस्सा दे रे क्या अरे रतिया भर सुतली है कहाँ आई नहीं हम फिर अबले लेके सुतर हम फिर चल गए फिर हो रहे हैं तो फिर वो जल्दी जाते थे आगे तो कैसे कैसे थी करके सुतर और 5 बजे जाके यहाँ से यहाँ बेचैनी सबको तबाही से बचा लिया। वो जैकपॉट कहाँ है? ये रहा इमली, अब इससे कोई खतरा नहीं है। वो अपने असली रूप में आ गया है। अब इसे भी आजाद करना चाहिए। ये देखा, इन 5 जीवों से वो जायंट बम बना था। इन 5 जीवों को भी बचा लिया।
क्या मिलेगा? पैसा क्या मिलेगा? खाओ क्या मैगी बना मैगी नहीं बनाना चाहिए। तो फिर खाओ नहीं कौन खाए? वाला था कुरकुरे चिप्स कुछ नहीं कर दूंगा। हाँ मैंने सब कर हाँ ले कुछ गणेशा से का खाएंगे गन्नू क्या खाएगा कुरकुरे चिप्स कुरकुरे चिप्स चिप्स लो पैसा वीर कौन सी चिप्स चिप्स खिलाई है? चिप्स और घर वाला चिप्स घर वाला चिप्स जो रात को देते चिप्स खाएगा वो नहीं खाएगा गन्नू ये वाला चिप्स ला वैसे तुम लोग को मन करके बना ये लो बिस्कुट लेगा। हाँ ये तो पूरा गन्नू दिखा लो all of chips लाओ कौन? कौन सा? जो पूरा की पूरा मत ले ये पानी हाँ पानी छना देता आई में बहुत बड़ा करला हजामत ना बनावला दाढ़ी ना बनावला बार न बांधी से नू न छुई कपड़ा न लगाई बरो न बांधी नू न छुई लाल पीला कपड़ा न पहने के नया पहने के मम्मी बताइए लाल पीला कपड़ा आज गुरुवार है एक महीने में पानी का ये लाल एग्जाम देखो देना दादी पैसा छोटा है नहीं अच्छा तुमको दे देंगे अरे मंगा देंगे मानेगा नहीं गन्नू मैगी खाएगा मैगी नहीं खाएगा नहीं खाएगा कितना मैगी लाओ छोड़ छोड़ खाती है गन्नू कितना मैगी दादी कितना मैगी लाता है ऐसे डरते रहेंगे तेरे को या पर लड़ झगड़ के खा लेते हैं हाँ अपन लड़ झगड़ के खा लेते हैं लेकिन मैं कैसे खेले ना सकूं वो जरूरत नहीं कितना लाते नहीं बड़ी ना मारे पानी डालकर उतार देने जाता दुकान छू देगा ये जरा ही ना तो क्यों आके बैठ सरों में नहीं बैठ रहे ना पंखा चालू कर दो ये जरा ही ना तो क्यों वो करे सर हमेशा भी बैठे रहा हमेशा वीडियो देखला तो वही पे ज्यादा बैठता है किनारा को तो जाओ चटाई लेके आओ हां धोल चटाई वो नहीं होता नहीं बेराई रे नहीं है ना भैया हां गए बाबा दौड़े गए आज वो आज तो गुरुवार है तो सुबह में क्या छुट्टी रहा ना
ये साबुन को तो देखे आए देखो ना तुम कहिएगा हाँ ब्रश का तेल वगैरह खाना वाला भी काम लगे ना खजूर खजूर को खाते हैं अरे बबनी आए मम्मी बोली तैयार हो जाए वाला तो फोन करेंगे 12 बज गए ये बारा दे वालों के तू चुपकी ना करे तो किम दे आज तो खुलने ना रही बंद रही चला देखते हैं दुकान बंद रहेगी दुकान ना बंद रहे 5 बजे के बाद खुले रहे खिचड़ी है ना दुकान थोड़ी बंद करना वोट दे के आके अपन चालू कर देंगे हाँ तो दोपहर के बाद हुई तो अरे ना बाबा ना बंद रहे ना खिचड़ी है क्या बार 2 बार तो गए तो 2 बार तब बंद दीवार ना रहता बंद जैसे दूगो मैगी ले ले बात किसको खाता गन्नू कर पड़ा चल चलो भाव लगाओ भैया इतना हराम होगा खत्म हो गया ना क्या देता खत्म पहले इधर आया तो तभी खत्म हो गया तो बचा के ले आओ चाहिए के कभी उधर बाहर थी ना अब वो लेके तो काय को किन ले रे पैसा पालो से तो खा ली दे पैसा दे खाली डाल के बना ठंडा उंडा मत करना अरे पानी दे वो प्याज ला सादा ऊपर का नाव का चप्पल वाला वो हेरा गई है हाँ उसे लड़का वाला पानिया ले आते रहिए पानिया ले आते रहिए गरम ना ठंडा
काय त्यानं वटवा दिलं गलगली का बेटा ठंडा पानी भाई मैंने वही जाता और देखो वो खुलल बा हाँ तो धाधा करवा में वही में खोल के धाधा के वही ऊपर आ ले हाँ ऊपरा वही लो ये हमारा वोटर आईडी कहां पर वो लेके जाए को पड़ी ना हमें पास खाली आधार कार्ड है उन्हें याद अच्छी चली नहीं कहाँ बाबू पता नहीं कहां बरुलिया के ना रहे हम तो ना मिला ना देवे देले सर ना देवे दे रहा कि साड़ी कर दे चले गए ना वोटर आईडी के ना होला ये लोग का पानी मिला ना पता कहां बा हमारा इधर ये रखिए इधर ये शॉट बोलो संकी अंदर का ही लगा दो पर मम्मी हो आप लोग गए थे तो नहीं बैठे जब बोला ले वो तो चले के बाद जाता बोला पिछली बार से मेरे पास है वो भी मेरे को मालूम नहीं रहता था हां कल सब लोग जाता है उसी में मैगी बना मम्मी कहा था वो मैगी बना रहा है इसको तकिया लेके तुम लोग फेंकना खाना नहीं चलो हम चलते हैं आ जाओगे तुम लोग वोटिंग के हमारी मर्जी की जब इधर जाओगे ये किसको देना चाहता था दादी किसको देगी क्या देना था दादी बीजेपी बीजेपी वाला नहीं गई ट्रेन को बनी धनुष के देगा जी धनुष के देगा जी इतना बोल देना मैं जाएगी बाहर पे चिल्लाते नहीं गली के लिए लेके आने वाली सबसे अच्छा मुझे हक लगाओ प्रिया की तरफ का एक पाई बाकी की बदले कर दूं वो अपने औरत को तलाक देता है उसकी दूसरी बीवी आती है तो अपने बीवी को पहली बीवी को बच्चों का खर्चा नहीं देता है तो उसी का 4 साल तक लड़ाई में स्टार्ट किए थे 4 साल कौन सी कहानी है मैं तो बड़ा पाव ले भी लाऊंगी बड़ा पाव कैसे बड़ा पाव तू बिना पूछे कैसे कैसे यही क्या कैसा किसको वोट दोगे मेरे को जिसका पहचान मुझे ज्यादा अच्छा लगता है मुझे पहचान मतलब अरे वो मत चुप तू मत बना गन्नू का है वो तो क्या वो मैं क्यों पता मत बनाते को बनाना नहीं आता मेरे
ये अपना अंदर सेंटर मत डालना, नहीं जैसा है वैसी डालो बस। वरना नहीं खाना। तो चलो ना जल्दी चलो ना। एक किधर है वो, ये किधर है, तो ये कर नहीं है, एक बाद में तो पाई नहीं होती। हाथ में हाँ बोले अच्छा तोड़ दो, भगवा तो देखिए तो पाई तब से स्लो आंच पे चल रहा था, वही बोलो इतना टाइम भी लगा। नहीं लगेगा, ऐसी जला नहीं ना गलत है, मैं उसको नहीं देखी। गंदा दिखता मुझे। देखो ये पिक्चर है, यही देख लो कभी से जब हम खाना खा रहे थे। चलो यार जल्दी चलो ना। हमारी क्या करता रहेगा, माल भी एक टिश्यू खाया। ये बनावा गरीब बनावा अरे बढ़िया रहा कौन सुस्ता रहती है। अरे गाड़ी गाड़ी को पता पास दे लगा दिया बजरंगी का लगे अब दे मैं मनीष माई फोन करते मैंने क्या करने लगी मनीष माई के अंदर लगे हैं। कब फोन करते नहीं आकर भी आई तो हम कहने कि हम कटवा चाऊ धोतियाँ होती कठिनाई नहीं आई तो मनीष माई की सीरत निकल के दो ही खाए के हम सीरत निकाले नहीं ना सवेरे सवेरे अच्छा खाएगा खा ले तो जो गाड़ी देखी है ना ठीक है अब खा ले तो मन करता है। क्या लो क्या रही है पंडिताई नहीं देख मारी हाँ नहीं देखा तो
कल कवड़िया ऐसी बना कल कवड़िया खिला कौन सुतल है ना हाँ दोनों तेरे लिए मैं गया लेकिन मैं दे बात कोई नहीं वो दूसरा करी ना आ दो नीचे बैठो दादी को चम्मच दे दो कौड़ी के आ जाओ आ जा भैया दे दो चम्मच दे दो दो चम्मच दे दो नीचे से जरूर बैठोगे चल पहले मेरा 5 रुपया दे तभी ये दादी लोग इसमें बैठेंगे ना जाओ चम्मच ले जाओ चम्मच नहीं बैठोगे पैसा एक ही कवर जल्दी वो ले देना बेटा चल 5 इधर दो चम्मच एक और लो नीचे कर दी सुनो दिक्कत दो चम्मच मिली ना और फिर गंजा में पड़ गया हम गंजा किधर कहीं से कर वो 100 जने रहिए गंज नहीं रहो तो क्या होगा का कहते हैं का सगाई का कृष्ण मंदिर लगा में देखो उनका चकिया साथ लगा सूर्य नगर में उनको नहीं एक चम्मच देखो चकिया साथ है पति तो कर रहे के जरूरी है तो हमारे पुस्तक कर चलिए बुरा हूँ ना तो पति 3 बजे का टाइम दे लगा 4 बजे का 5 बजे नाश्ता पानी लेकिन सगाई लेकिन खाना रखेंगे बोले देखते घर वाला पसंद नहीं हुई तो इसलिए कही रही खाना रखेंगे तो लेट हो जाइए हम काल तो कल कहाँ जाए काले का टिकट कल शादी का हाँ काम करने जाए था चल जा करके सब अभी 9 दिन बोले हैं तवा रही सब गई करी माने नहीं तो कहती हाँ हाँ वो तो कटवा तो इसलिए नहीं पड़ेगा अरे मार्च में 19 तारीख को पूरा हाँ बहुत रखा जैसे नवरात्रि में माने कि आज तक 15 हो गए 15 के मारा ही 13 के आ गए थे ऐसा तो कहाँ मिली मेरा मैं तेरा में दो दिन 16 17 18 19 दो दिन 18 गाड़ी पकड़ी नहीं तो चले निकलना ना का अभी काहे अरे सेवरी 15 दिन निकाले को तो अभी पैसे नहीं दे तो अब ना तो फिर नवरात्र फोन कर ले रहे हाँ तो दिखे हर बकवा तारी की तंतु इनके देख ला पूछ ला जाकर हम तो जानते नहीं कि इनके कौन बाड़ी बूढ़ा है कौन ठंडा हो गया ठंडा दिल्ली के घर की ओर आप पीछे जाए खातिर हो जाइए पता नहीं उनके चिड़ै रुपये बाड़ी के हमारे के लिए आके चलिए जाए चंदा के माई के नाम कहते नहीं चंदा के माई के नाम कहते जो बूढ़ा आज बगान कुर्सिया वाला घर में आए उनके रूम बगलिया में कौन आए हाँ हमारे आई दिल्ली के हम आई साथ रही ना दिल्ली का हाँ ये कमाई तो ये हर पास दिल्ली में कौन जाने का नहीं कोई फोन करके ये बंसी की पटोरी के पैसा दे तो निकाले को तैयार दीजिए अरे लेके आ जा हमारे घर वहाँ से देख लेना है नहीं दिल्ली की होली में क्या सकते हाँ तो कहानी फोन करके बोल रहे कि बंसी की पटोरा के लिए पैसा देना नानी के लिए नवरात्र बाद जाएगी नानी के लिए तो नवरात्र आ जाता है सबसे करे हुई नवरात्र के बाद एकदम टाइम वो गर्मी में घूमने की हालत खराब है
जाए क्या करें? चाहते रहते निकला रहे कभी कभी भी आवाज पहले जाके चल जाए। आज तब तो ना निकला अरे तो ठेला मठेला हो तो बा लिए के माइक को दे ही देने कर माउकी दे ही देने तोहरे निकाले में लिए थे ना अरे देख के अब वो कहतारी तो उनकर के करे कह देता निकालो तो निकाली जाए। वो लोग अब जानकारी नहीं के तो कैसे हम कहाँ से मंगाएं। पता तो हम निकाले तू अपने पे ले लिया लेंगे और पैसा भेजा नहीं ना तो नहीं कराएगा। हाँ बिना पैसा का ना निकलेगा सर आप मोबाइल पर आ जाता है आजकल पैसा के जमा बाद में ना गए लोग कहीं से नहीं लापरवाही कर तो बहुत लापरवाही तो लापरवाही से सोचा जब टिकट निकालेगा तो निकाल ले हम ना दे लेंगे पैसा ना देने को छोड़ दा और से फोन कर तो ना निकलता। हाँ दिले नहीं तो क्या करें निकलिए हाँ तो कहता पर ना निकलिए। हाँ उनके जवान उनके दिन में पैसा ना देकर रह गए फिर अब नवरात्र आ जाता कहाँ जाएंगे 18-19 अरे उनका हो ही गल मनीष के माइक कर ज्योति के अरे उनका नीरज के माइक हो ही गल और माजी को हो ही गल तो और हो ही गल कितना निकाल ला तब तू लंडा चल गई वहाँ कान के उनसे बता अरे कहते मुँह तब नहीं कहेला जाए कहीं ना तो पैसा तू कभी कहिए से जाए कोई वैकेंसी होगा जब मन ना रहे तब तो वही के हम चल पैसा भेजे भेजा मोबाइल पर झट से निकल जा हाँ तो काहे ना कहो तो पैसा फोन कर रहे हैं देखा नवरात्र के पहले आवे के है नंबर करा पैसा लेकर हमरे डाला लाइन में लगवा ले अरे तो जो हम तो कर लेंगे मेरी के ना बाद में गर्दी हो जाला सब काम घर का मेरा काम आगे मेरा कुछ भीड़ लगी ये बेरा गर्दी है। जालो दे आओ हम बाद में ये ले गए ना फिर ऑटो वाला ले लेंगे हाँ ये लेके वाला तो नीचे जाएगा तो नीचे जाएगा कहाँ दिया है बीपीएस कर देंगे अरे कहाँ हमारे कहना ना है नहीं आया हमारे कहना हमारे वही में हमें चाहला हमारे कमरे कंपाउंड का है ना हमारे वही जना वाला हमारे कमरे कंपाउंड वाला हनुमान नगर का नंदी निकल ही ना रही नहीं राधे का बहनिया को लो ही हनुमान नगर के जितना सब ही ना राधे को बहनिया मैंने क्यों कर बताया हाँ राधे को बहनिया क्या क्या कहीं हुई है ना बड़े तरह के बड़े बना साड़ी करने से कम बनती चाहिए देखना साड़ी मनीष के माई अच्छा जाके तो 5 कलर लाल कलर बांधने में पढ़ाई की 2 बोली हाँ जाके देख रेडी है क्या
पानी में गिर जाए देखो बिस्कुट थोड़े से सो गया हाथ में से लेकर खिला दो मैं खिला दूँ मैं नहीं खाओगे तो सबसे मार दो इधर भी शादी तो ना चटाई धो के लाएंगे शादी के साइड में एक साइड हाँ इधर भी मारो फिर बंद कर दो हाँ उनको लेके सोने को चाहिए इसके लिए रो रहे हैं इनके अंदर ना ले चल एक इतना मोबाइल दे वो पाउचियाँ इनको पाउची ले लूँ पाउची ले लूँ ये बोलो ये कि मैं भी चलूंगी मेरे को कुछ चाहिए तो किन के लिए गए रे और ले कितना हरामी बा 20 रुपया के वो ले आइलो आ वो ले मैगी खाई अभी जस्ट मैगी खाई जब भैया दिलाएगा दो नहीं दो पैसा पैसा दो पैसा तो बिना कुछ नहीं लाऊंगा हाँ अभी नहीं चले चलो तुमने चप्पल पहना चप्पल पहनो ले रे ले जल्दी ला दो फिर लास्ट चलना है मम्मी पूरा टाइट पूरा ये सत्यम गौरी को बॉल दिला दे तो अभी बैठ जाने बॉल लेके आएगी तो चलते हैं बैठ कांच बॉल दिया के नाम ला हमें दिला के क्या चलो ना लेके उधर है ना अंदर नहीं जाने देते ना फिर बाहर कहाँ छोड़ेंगे अरे तो कोई लोग में पकड़े रहेगा बाहर में रखेंगे अंदर जाने ही नहीं देंगे एक जना खा चलो ना लेके देखे हैं जान देगा क्यों नहीं बच्चा लाने जाने नहीं देंगे बच्चे से का एलर्जी है अब तो घर में कोई नहीं रहे तो बच्चा को लेके नहीं जाएगा बोलने वाले बच्चे घर में कोई नहीं रहे तो बच्चा नहीं जाएगा चप्पल पहन छोड़ेगा चाहिए तुम्हारा बाबू का चप्पल किधर है बाबू का अपने लिए ऐसा बाबू का चप्पल किधर है चलो बाहर ही इधर बुला दो छोटी छोटी कोई रहेगा तब काजल लगा दो है ना क्या छोटी को बुलाओ चलिए चलिए अरे 50 रुपये खत्म ले ए मम्मी गई एक दी आई दी को ऊपर है वो घर पे किधर ही थी ना भी हाँ बस अभी बजे 5 बजे लगाया अच्छा
5 हर हर महादेव। राधे 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 राधे। जय श्री राम। दे आया बाबू। वो वाला नमो वाला चाहिए हाँ जो हमारी वो तो वाला दिखा रहा था हाँ।
शीतल के छोटी के नहीं के का होती है तो कर लिखाए तो क्या कर आयरन हो सकते हैं बंद कर बाबू बंद कर हाँ? हर हर महादेव, राधे राधे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में लिख के बताइए ना। हर हर महादेव। मेरे लाइफ में बहुत बहुत स्वागत है आपको। लाइक करिए।
राधे 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 राधे।